batters. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah, and wishing you a very good afternoon as we are live and exclusive from this beautiful and iconic sports field of Janwara. And it's Janwara Cricket League coming your way on Global News Network, and we are coming up with a big game. Rising Star Sopore taking on Shagoo Sports, and after winning the toss, Shagoo Sports, they have opted to field the first. Miraj Dar and Rafiq Dar are the two openers out there in the middle, while as Lun Momin has got the white cherry in hand, has got the white ball in hand, and is operating from the far end. And first ball was onto the pads. It brushed the trouser off the batter en routing to the wicket keeper as Momin goes over the stumps and nicely works it away on the onside, goes in the gap to the scare leg region, and both the batters are off the batter is off the mark with a single. Momin straying down the leg side, bowling it on middle and leg stump line, and he nicely flicks it away and gets off the mark. First runs on the board for Rising Star Sopore. It's one without loss. Momin bowling from the far end, and he needs to be wicket to wicket. He needs to find the right spot where he needs to bowl. He's got a brand new ball in hand and he can swing it both ways. He's got all the skills as a bowler, and it will be Rafiq Dar to face him for the first time. He's not got any slip in place. With a new ball, he is rather a gully, and he has got backward a point onto that middle and leg stump again, and the batter keeps it away on the onside. As the fielder goes and he stops the ball, the batter's had enough time to cross for a single. So he got both the batters off the mark with a single. 3 80s on board. First one was down the leg side and it was called as wide. It is 3 without loss in over number 1. And on the offside, he has got close in fielders. 3 neck to neck. He's got short cover at catching position, long off, mid on, deep scare leg, and fine leg in place. Next ball, and he bowls him. Gone through the gate. He was waiting for the ball to come, but he was all too late, and the ball sneaks through, and cannon is on to the leg stump. Momin draws the first blood, and he clean bowls Miraj Dar. And look at that in slow motion replays. That was a perfect line, perfect length to the right-hander. Comes back into the batter, and he was rooted to the crease. Gets beaten all lengths up, and the ball cannon is on to the stumps. Crashes onto the leg stump, and here is the first wicket, early wicket for Shagoo Sports, and it's Lun Momin who has got the first wicket for the team. Rising Star Sopore lose their first. It's just 3 on board for the loss of 1. A wicket in the first over, and lets out that Eldorado celebrations by Lun Momin. He has the first wicket and he clean bowls Miraj Dar. He departs on a solitary 1. He departs on a single digit score, goes back to the pavilion, and the new batter just makes his way into the middle. That is a dream start for Lun Momin. Just gets the ball cut into the batter. As I told you earlier, it's a new ball and it can swing a bit off the surface. There will be a gentle help off the surface, and this one Momin brings the ball back into the right-hander, and he was late to bring his bat down in time, and a small little gap between bat and pad, and the ball crashes through and hits the timber, and Rafiq Dar, Miraj Dar it is, who has to walk back to the pavilion. The new batter is in, and it's a great start. It's a fantastic start for Lun Momin as he gets the first wicket of the day. 3 for the loss of 1, and it's Mohammad Ishfaq Mir who is just arriving at the crease at number 3 for the team. Wicketkeeper is standing back. He's got the Sam fielder set, and 1 at short third man, 1 at gully, 1 at point, 1 at short cover. So he's got 4 fielders inside the ring on the offside, 1 at long off, mid on is in, fine leg is in. He's got deep scare leg back. Next ball, bowls him again. 2 in a row, and Momin is on fire with the ball. That was a nothing shot at all. It was full, and the batter was trying to go the very first ball, and he has no connection at all, and Lun Momin finds the timber once again. Back-to-back wickets, and in spot of bother here, Rising Star Sopore. It got off the worst possible start, and to me, that was never a shot. It was a nothing shot. Full delivery. You lost to the wicket of the previous ball, and you were trying to go downtown first ball, and Momin once again
breaks the defense of the batter, goes through and onto the stumps. 2 wickets of 2 bowlers. What a start this is for Lone Moment. It's 3 for the loss of 2. Been dented early, and this is a kind of start Shagoo Sports needed in the game after winning the toss. For me, it was a good toss to win for the side, and Lone Moment is doing what he is known for. 2 wickets of 2 bowlers, and he is a jubilant man, and absolute devastation for the batting side. Not the kind of start they would have liked it for after being opted to bat first, and the top order has been rattled, and he's ripping through the top order Moment. And importantly, he's keeping it nice and simple, and he's keeping it wicket to wicket. As I told you, we need to bowl up to the stumps and find those right spots where you need to bowl, and he is doing exactly what the doctor ordered for them. 3 for the loss of 2, and Moment is a happy man. He jumps in jubilation, jumps in joy. He's now on a hat-trick. He's got a chance to script history here, and in a Janwara Cricket League he's got a chance to get a hat-trick. 2 wickets of 2 bowlers, as Kashif is the new man. Oh boy, he will be under serious pressure. He has lost 2 wickets of 2 balls, and he is facing that hat-trick delivery. We'll have to wait and watch. Can Lone Moment break one more defense here? Can he get a wicket here and to write his name in the history books? He's got a chance, and he's going with an attacking field set. Basit Direct slips. He's got short mid-wicket at catching position. He's got short third man gully and short cover. Now that long off is in at mid-off. So he is on a hat-trick ball for a moment. Over the stumps he goes. Again, that was a good ball, and at the final moment, at the last moment, the batter just manages to get his bat down on time, and he pushes that one back to the bowler. That was a terrific delivery. And nearly it was 1 more wicket for Lone Moment, but to the batter. He was watching the ball till the last moment, and he pushes it away back to the bowler. A successful over, a phenomenal start for Shagoo Sports Sopore. 1 done, and Rising Stars are reeling at 3 for the loss of 2 in tatters. 2 wickets back to back for Moment in the very first over. And in the meantime, we got a couple of viewers watching the game, commenting on Global News Network. It is Sheikh Haroon, Walaikum Salam, and Dar Danish Nazakat Ali is watching from Sumbul Sonawari. So may I remind you once again, you're watching it on YouTube's JK Sports Discovery and enjoying on Facebook Global News Network as well. And it's Janwara Cricket League coming your way, and we got an important game. We got a mouth-watering clash between the two sides. A formidable side of Shagoo Sports Sopore is taking on Rising Stars. First ball down the leg side, and he starts with a wide, and a boundary conceded as well. Nothing wicketkeeper could have done about this. He tried his level best, but he was never going to reach to the ball. 5 wide is to start, and Basarat Manzoor, another talented fast bowler, he's got a ball in hand, and he starts with a wayward delivery. Starts with a terrible ball down the leg side, and wide signal, 5 wide, and takes the score to 8 for the loss of 2. Rafiq, who is just batting on 1. Kashif is yet to get off the mark, and Lone Moment was wrecking havoc in that very first over, getting 2 wickets off 2 bowlers. Basharat goes again, and this time he bowls a good delivery. He's attacking the batter, and he is half forward. He tamely pushes it on the offside and nearly hits the handle of the bat, rolls down to the cover, where he has got Naveed Ganai fielding at short cover at catching position, and there is no chance of a run. Now he feels there is a need of slip. He is bowling with a new ball. That is why he's got that Basit Direct slips. He's got short cover as well. An attacking mindset by the captain as Basharat goes again. He pulls him on the onside. Doesn't time it well. Find a short mid-wicket inside the ring. And there is no addition to the total. Rafiq Dar batting on 1 of 3. And he was accompanying Miraj today, and both the batters Miraj and Ishfaq were clean bowled by Lone Moment, and it was a dream start. And in the meantime, Basharat goes once again from the far end for the 3rd time over the stumps to Rafiq. That's a good delivery, a pacey ball, but it chips away from the right-hander and has been signalled as wide by the umpire. Nazakat Ali, Fayyaz Ahmed Sheikh. It's Janwara Sopore which is hosting Janwara Cricket League, and this iconic, mesmerizing and beautiful sports field we got
and lush green outfield, a lightning fast outfield as well. And I could say a beautiful atmosphere, a beautiful environment for game of cricket. Next ball, and he jumps on the toes, pushes it on the offside and calls for a quick single. And they rotate the strike. That's what you need to do. Lost 2 wickets at the top and in a quick time. It's very important for both the batters out there. You just need to get a partnership. You just need to get your feet in first, and won't be easy against this quality bowling side. You got Mohammad Salim, you got Naveed Ganai, the experienced campaigner. You got Lone Momin and Basharat Manzoor. I can say a dangerous fast bowling attack. Lone Momin and Shagoo Sports they got, and including Basharat Manzoor added to the miseries of the batters as well. Again slips down the leg side, will have to rebowl. It's a wide, and Ashfaq is watching the game. Mir Shabir, it's a beautiful ground, absolutely terrific. And Dar Waheed watching from Nopora Sopore. Thank you very much, Waheed. He's been the regular viewer of Global News Network, so you can enjoy it on YouTube as well. If you want to enjoy the game, you just go and search JK Sports Discovery, and humbly request you all to subscribe the channel as well. And in case if you're watching us on Global News Network, don't forget to press the follow button. As Basharat goes again, he's struggling a bit. He's trying to do those extra things. Need to bowl like Lone Momin was bowling up to the stumps and keeping it nice and simple, while as Basharat is trying to use the shoulder, is trying to bowl with pace, and that's why he is looking off cover. He is spraying it way down the leg side, and he has conceded way too many runs, additional runs in this over. 5 wides to start the back-to-back wides as well. Need to create that pressure. You already created that pressure on the batters. You have to go with the swing. You can't let the batters to leave that mark with the bat, and you can't let batters to score runs freely. You've been given the ball in hand, and you need to bowl with that new ball exceedingly well. Talk about the playing 11 of both the teams. Rising Stars, they got Captain Rafiq Dar, Furqan Lefty, Kashif, Lun, Gudu, and it's Lun Salim, Mehraj Dar, Muhammad Azhar, Muhammad Ishfaq Mir, Shakir Butt, Shakir Fayaz and Omer Saidullah. Basharat goes again, and once again was down the leg side. He helps it away on the onside until wicketkeeper goes, even though he had backing up fine leg fielder, but the batters had a chance to cross over for a single. It is 13 for the loss of 2, and Shagoo Sports, as you know, always a formidable side, always a tough side, led by Lone Momin, Asif Dilshad Malik, Basharat Manzoor, Basit Dar, Ishfaq Nabi Dar, Muhammad Salim, Murtaza Hilal, Nasir Nusad, Naveed Ganai, Sajad Ahmed and Yasin. They got a quality side. And Mir Javed, we got commentator Inayat Hussain as well. Thank you very much, Inayat Hussain. And Mansoor Ahmed is watching from his official handle of Mansoor Decorations at Rafiabad. It will be the final ball as Basharat goes for the final time over the stumps. Again, he is off color, he is down the leg side and has to rebowl this one. It's been tough going for Basharat in this over. He's bowled 5 balls, legitimate, but if we count those balls, he's bowled 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bowlers until now in this over. And it's been problems for the bowler, as I told you. You just need to bowl up to the mark. You just need to bowl according to the field. You got good number of fielders on the offside, and coordinate that offside fielder from that backward point to slip region. He's got 2 slips in place now. You got those fielders on the offside, and adding to the miseries is bowling down the leg side. Basharat, this one is up and over point, and the ball is trickling away down to the boundary ropes, and it was Muhammad Salim sliding across the turf, and he stops the ball near the boundary ropes. A good effort there as he keeps the batters down to 2. 2 overs gone, and it's 16 for the loss of 2. Alongside me, I have Sophie Parvez as well. Let's warmly welcome him to the commentary box. बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिरदौस। तो जानवारा क्रिकेट लीग का एक अहम मुकाबला जो कि इस वक्त जारी है जानवारा स्पोर्ट्स फील्ड पर शगू स्पोर्ट्स और राइजिंग स्टार सोपोर के माबैन। राइजिंग स्टार सोपोर की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है शगू स्पोर्ट्स के खिलाफ, और 2 खिलाड़ी पवेलियन वापस जा चुके हैं। मजमूई स्कोर है 16, 2 विकेटों के नुकसान पर 2 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक और क्रिक हीरोज ऐप पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डार वहीद हमारे साथ जुड़े हैं, मीर फैयाज,
रफियाबाद से सोइन प्रीमियर लीग के हवाले से जानकारी दे रहे हैं कमेंटेटर इनायत हुसैन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोन मोमिन जो है पारी का तीसरा ओवर और इनफरादी तौर उनका दूसरा ओवर, पहले ओवर में लगातार जो है 2 गेंदों पर 2 विकेटें हासिल की लोन मोमिन। तीसरे ओवर की पहली गेंद के साथ लेग स्टंप के आसपास और गेंद को, हालांकि पूरी तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं और दोनों बल्लेबाज जो है रन के लिए दौड़ पड़े। इस दौरान थ्रो डायरेक्ट हिट लेकिन पहुंच चुके थे बल्लेबाज। इशारा दिया अंपायर ने, 1 रन का इजाफा स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ 17 2 विकेटों के नुकसान पर। रफीक और काशिफ जो है वो इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। काशिफ ने 2 रन बनाए जबकि रफीक डार ने 4 रन बनाए 5 गेंदों का सामना करते हुए। एक मतलब फिर रफीक जो है अब सामना करेंगे लोन मोमिन की गेंद का। ऑन साइड पर 2 बल्कि 3 खिलाड़ी तैनात और ऑफ साइड पर 6 खिलाड़ी तैनात किए गए हैं। लोन मोमिन लंबा बॉलिंग रन अप ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, विकेटों पे पहुंचे, कदमों का इस्तेमाल और बोर्ड हो गया है, सीधे मिडिल स्टंप को गेंद छू गई। आपको रीप्ले में स्लो मोशन में दिखाना चाहेंगे किस तरह से कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन गेंद जो है सीधे मिडिल स्टंप को छू गई और तीसरी विकेट गिरती हुई राइजिंग स्टार सोपोर की 17 के मजमूई स्कोर पर। 17 के मजमूई स्कोर पर यह तीसरी विकेट गिरी है। और डार वहीद आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहमद और वासिफ का नाम बोलो ब्रदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और कासिफ जो है वो बॉलिंग मार्क बल्कि नॉन स्ट्राइक एंड पर है और लोन मोमिन के खाते में जाने वाली ये तीसरी विकेट। अपने पहले ओवर में 2 विकेटें हासिल की थी लगातार 2 गेंदों पर और अपने दूसरे ओवर में भी विकेट हासिल होती हुई रफीक डार के रूप में। मीर मुदस्सिर जानवारा से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डार वहीद हमारे साथ जुड़े हैं। मीर फैयाज सोइन प्रीमियर लीग के हवाले से लिख रहे हैं कि एडिशन सेकंड का फाइनल जो है बुधवार को खेला जाएगा, आरसीबी वर्सेस राइजिंग स्टार खाद्यार। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और कमेंटेटर इनायत हुसैन भी हमारे साथ जुड़े हैं। मीर जावेद के साथ मंसूर डेकोरेशन हमारे साथ जुड़े हैं जो कि हमारे स्पॉन्सर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक और क्रिक हीरोज ऐप पर बैक वक्त देख सकते हैं। अब देखना होगा नए बल्लेबाज कौन से आए हैं राइजिंग स्टार सोपोर की जानिब से। कहा जाएगा कि एक खराब शुरुआत होती हुई राइजिंग स्टार सोपोर की इस अहम मुकाबले में, हालांकि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और अपने पहले ही ओवर में 2 विकेटें जो है वो गिर चुकी थी और अब इस तीसरे ओवर में एक और विकेट गिरी रफीक डार के रूप में। 17 के स्कोर पर 3 खिलाड़ी पेवेलियन वापस जा चुके हैं। लोन मोमिन अभी तक जो है इस मुकाबले में बेहतरीन अंदाज से गेंदबाजी करते हुए। और लेजेंड बॉय हमारे साथ जुड़े हैं यूट्यूब पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यादव आपका भी बहुत, पूनम यादव आप हमारे साथ जुड़े हैं और सईद खान भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सईद खान जो है वो नेटवर्क के हवाले से जानकारी दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इस दौरान गेंद को खेला फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन गेंद की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज और देखना होगा गेंद गालिबन बाउंड्री लाइन के करीब जो है गेंद की रफ्तार कम होती हुई। इस दौरान 4 रन का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से। 4 रन के इजाफे के साथ ये पहला चौका आता हुआ लोन सलीम के बल्ले से। उन्होंने अपना खाता खोला चौके की मदद से और स्कोर बढ़ता हुआ 21-3 विकेटों के नुकसान पर। शेख तारिक हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे साथ जुड़े हैं और बेस्ट ऑफ लक शगू स्पोर्ट्स के लिए लिख रहे हैं रईस रियाज। अगली गेंद लोन मोमिन की, इस मरतबा नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से। फ्री हिट मिलेगी और सलीम के लिए हाथ खोलने का भरपूर मौका। लोन सलीम के पास भरपूर मौका है हाथ खोलने का। फ्री हिट होगी और क्या कोई बड़ा स्ट्रोक खेलने में कामयाब होंगे लोन मोमिन, ये देखना है, बल्कि लोन सलीम ये देखना होगा। और लोन मोमिन है बॉलिंग मार्क पर, मजमूई तौर पर 22 हो चुका है स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। लोन मोमिन बॉलिंग मार्क पर बिल्कुल तैयार, 15 या 16 कदमों का रनअप लोन मोमिन का। ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, सलीम के लिए ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर देखना होगा। अंपायर की जानिब से कोई इशारा नहीं आता हुआ और ये डॉट गेंद, कोई फायदा नहीं उठा पाए इस गेंद पर लोन सलीम। हाशिम शाला हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और वलुत्रा से कुछ दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, इसके अलावा सज्जाद राथर हमारे साथ जुड़े हैं शेख तारिक के साथ। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। लोन मोमिन अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद के बैट और पैड साथ मिलाते हुए गेंद को खेलने की कोशिश, पैड से टकराई, हल्की सी अपील, लेकिन इस दौरान रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज और रन मुकम्मल होता हुआ। सज्जाद लोन जानना चाहते हैं कि कौन से खिलाड़ी जो है वो पेवेलियन वापस जा चुके हैं।
रफीक डार आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। इसके अलावा और 2 खिलाड़ी बशारत और जो खिलाड़ी पवेलियन वापस जा चुके हैं, हम आप तक उनका नाम जरूर पहुंचाएंगे। महराज डार, इशफाक और रफीक डार, ये 3 खिलाड़ी पवेलियन वापस जा चुके हैं। लोन मोमिन अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया। इस मरतबा गेंद को खेला जारहाना अंदाज से खेलने की कोशिश, लेकिन पूरी तरह से गेंद बल्ले पर एक मरतबा फिर नहीं आई और मिड ऑफ से फील्डर गए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन मुकम्मल किया। तो 3 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 24 मजमूई स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर राइजिंग स्टार सोपोर का। इस अहम मुकाबले में जानवारा क्रिकेट लीग और जानवारा का स्पोर्ट्स फील्ड बड़ा खूबसूरत मैदान, T20 के एतबार से अगर देखा जाए तो मवाफिक मैदान, चारों अतराफ जो है लंबी बाउंड्रियां है और बिल्कुल आउटफील्ड हमें लग रहा है कि आउटफील्ड भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होगी, क्योंकि बिल्कुल जो है कहा जाएगा कि फ्लैट हमवार आउटफील्ड है। ऑफसाइड पर 6 खिलाड़ी तैनात, तो दायरे के अंदर तमाम खिलाड़ी है ऑफसाइड पर। इस दौरान पटकी हुई गेंद और गेंद को खेलना चाहता ऑन साइड की जानिब, गालिबन गेंद जो है उनके बाएं बाजू को छूने के बाद स्लिप की जानिब गई, जहां पर गेंद को फील्ड किया। अब गेंद जो है मुख्तलिफ हाथों से होती हुई एक मरतबा फिर गेंदबाज बशारत के हाथ में। 24 स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल जारी। मोहम्मद शफी भट्ट हमारे साथ तारजु सोपोर से जुड़े हैं, वानी तारिक जुड़े हैं और इनके साथ साथ तारिक वानी भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली गेंद बशारत के इस मरतबा हवा में खेला गया स्ट्रोक, फील्डर गेंद के नीचे मिड ऑन पर और गेंद सीधे उनके हाथ में और इस तरह से ये चौथी विकेट गिरती हुई गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक आ जाएगा इस मरतबा काशिफ के बल्ले से। काशिफ के बल्ले से गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक और अपनी विकेट यहां पर गंवा दी काशिफ ने। चौथी विकेट गिरते हुए राइजिंग स्टार सोपोर की 24 के मजमूई स्कोर पर। जावेद मीर हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड इन डिस्ट्रिक्ट बारामूला, ये जावेद मीर लिख रहे हैं। और चौथे ओवर का खेल जारी है। बशारत मंजूर के खाते में जाने वाली है पहली विकेट। बशारत मंजूर के खाते में जाने वाली पहली विकेट। 24 मजमूई स्कोर 3 बल्कि 4 विकेटों के नुकसान पर काशिफ 3 रन बनाकर आउट हुए। 6 गेंदों का सामना किया काशिफ ने और बशारत मंजूर की गेंद का शिकार बने काशिफ। जेके स्पोर्ट्स प्लस से हमारे साथ कुछ दोस्त जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका काम भी जरूर हो जाएगा, आप हमारे साथ बने रहिए। मीर अमीन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप डिस्ट्रिक्ट बल्कि टीचर्स फोरम जोन रोहामा के जो है प्रेसिडेंट है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो जेके स्पोर्ट्स प्लस से आगा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और यहाँ सूरत हाल जो मैच की है राइजिंग स्टार के लिए कहा जाएगा कि अच्छी नहीं है, क्योंकि खराब शुरुआत होती हुई राइजिंग स्टार सोपोर की विकेट पर ठहरने की जरूरत है। एक साझेदारी, एक पार्टनरशिप को बिल्ड करने की जरूरत है, क्योंकि पहले ही 4 विकेटें गिर चुके हैं और मैच चौथे ओवर का खेल जारी है। 24 स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर। नए बल्लेबाज आए हैं, उनका नाम अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, अब अपडेट होता हुआ शाकिर भट्ट आए हैं। नए बल्लेबाज शाकिर भट्ट आए हैं जो सामना करेंगे बशारत मंजूर की गेंद का और बशारत मंजूर ओवर में तीसरी गेंद के साथ। ये चौथे ओवर का खेल जारी है। 24 मजमूई स्कोर राइजिंग स्टार सोपोर का इस वक्त शगू स्पोर्ट्स सोपोर के खिलाफ। तारिक वानी बहुत बहुत शुक्रिया, वॉचिंग फ्रॉम डंगी वच्छा, स्वीट वॉइस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगली गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से। स्कोर बढ़ता हुआ एक इजाफी रन के साथ 25 3 विकेटों के नुकसान पर राइजिंग स्टार सोपोर का। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और लाइव नशरियात को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके और इस मुकाबले का आनंद ले सके। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक पर बैक वक्त देख सकते हैं, इसके अलावा आप हमें क्रिक हीरोज ऐप पर भी देख सकते हैं। अगली गेंद और बैट और पैड साथ मिलाते हुए पूरी तरह से विकेटें कवर करके गेंद को खेला, रन बनाने का कोई मौका नहीं। चौथे ओवर का खेल जारी। शाहिद हबीब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहिद हबीब और फैसल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइव नशरियात को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकी दोस्त भी इस मुकाबले का आनंद ले सके।
ये मुकाबला जानवारा क्रिकेट लीग का एक अहम मुकाबला इस वक्त जारी जानवारा के स्पोर्ट्स फील्ड पर शगू स्पोर्ट्स और राइजिंग स्टार सोपोर के माबैन। बशारत अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट। इस मरतबा अच्छी गेंद, हालांकि पंजों पर उछल कर गेंद को खेलने की कोशिश की थी, गेंद जो है विकेट कीपर सफाई के साथ रोक नहीं पाए और अब मुख्तलिफ हाथों से गुजरती हुई गेंद एक मरतबा फिर गेंदबाज के जानिब। बशारत मंजूर एक मरतबा फिर ओवर में अगली गेंद के साथ। चौथे ओवर का खेल जारी है। मोहम्मद इकबाल बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ग्राउंड लिख रहे हैं। शाह शौकत भी हमारे साथ जुड़े हैं बिलाल हबीब के साथ और शब्बीर नाइकू भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिलाल हबीब लिख रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग बॉडी के हवाले से बहुत बहुत शुक्रिया ऑर्गेनाइजिंग बॉडी की सराहना के लिए। और बड़ा खूबसूरत मैदान यकीनन कहा जाएगा ये जानवारा का स्पोर्ट्स फील्ड, और इस स्पोर्ट्स फील्ड पर जानवारा क्रिकेट लीग के तहत एक अहम मुकाबला इस वक्त जारी। बशारत मंजूर अगली गेंद के साथ, सामने है शाकिर भट्ट, गेंद की उछाल लेती हुई गेंद आखिरी लम्हात पर बल्ला देने में कामयाब और गेंद गई गली की जानिब जहां पर गेंद को फील्ड किया गया। रन बनाने का कोई मौका नहीं। ऑफ साइड पर 6 खिलाड़ी जो तैनात है वो दायरे के अंदर तमाम खिलाड़ी, जबकि ऑन साइड पर स्क्वायर लेग और फाइन लेग बाउंड्री पर जो है खिलाड़ी तैनात किए गए हैं। 3 खिलाड़ी ऑन साइड पर है और मिड ऑन पर 1 खिलाड़ी, जबकि स्क्वायर लेग बाउंड्री पर 1 खिलाड़ी और फाइन लेग बाउंड्री पर 1 खिलाड़ी। इसी बीच बशारत मंजूर अगली गेंद के साथ, गेंद की इस मरतबा गेंद की रफ्तार को कम किया था, परखने में कामयाब। इस दौरान नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से स्कोर बढ़ता हुआ एक इजाफी रन के साथ 27 और फ्री हिट होगी। हाथ खोलने का भरपूर मौका शाकिर भट्ट के पास, क्या कोई बड़ा स्ट्रोक खेलने में कामयाब होंगे? अभी तक इस मुकाबले में कहा जाएगा कि पूरी तरह से बल्लेबाजों को बांध के रखा है शगू स्पोर्ट्स सोपोर के गेंदबाजों ने, खुसूसन लोन मोमिन ने, क्योंकि उन्होंने अपने 2 ओवर के स्पेल में अभी तक 3 विकेटें हासिल की है। बिलाल हबीब, शब्बीर नाइकू बहुत बहुत शुक्रिया। अगली गेंद फ्री हिट के तौर पर, और इस मरतबा गेंद जो है पैड को छूने के बाद स्लिप की जानिब गई जहां पर गेंद को फील्ड किया गया। ओवर मुकम्मल, 4 ओवर्स का खेल मुकम्मल। मजमूई स्कोर है 27, 4 विकेटों के नुकसान पर राइजिंग स्टार सोपोर का, और खराब शुरुआत इस मुकाबले में होती हुई राइजिंग स्टार सोपोर की। Surely got off to the worst possible start. 4 wickets back into the pavilion, inside the power play. Just 4 overs have been bowled and just 27 runs on board. And the batters needed to step up. Doesn't look any demands on the wicket. The ball comes nicely onto the bat. It's a good wicket for the batters. Those wickets, they have thrown away their wickets. Again, is Lon Momin trying to go after him, trying to go for those big shots. And you can see 4 wickets are down, and all the batters have departed cheaply, not been able to contribute well with the bat. Momin will continue in his 3rd over, and first ball that was swinging into the batter. It was a booming in swinger, gets wrapped on the pads, rolls to the fine leg region, and Nasir is there inside the ring, and no chance of a run. There has been a complete blockage on the runs, completely dried up now. Just 27 they have on board, and we're in over number 5 of the first innings. It's Lon Salim on 4, and Shakir yet to get off the mark. Next ball, and again Momin, he's trying to bring that ball right into the right-hander, back into the right-hander. He knows that while he has a chance to clean bowl the batter, and he has a chance to get him LBW as well. And he's starting on that off-stump line, and he knows it very well. Once the batter misses the ball, you miss a hit, and he can have a chance as well. 28 for the loss of 4 it is in over number 5 of the first innings. And got to give due credit to the bowler as well for showing his heart with the ball. He's got number of fielders inside the ring on the offside. Next ball, and he works him nicely, beautifully played, times that one well. But cannot beat that fielder inside the ring at mid-on. Basharat moves to his left quickly, and the batters in the meantime had enough time to cross the respective ends. A single to Shakir Bhatt, and he is off the mark. Takes them to 29 as Momin goes once again full into the block hole, and the batter was backing away, and he finally jams the ball off an inside edge.
rollers on the offside. They steal a single again, and Momin has been brilliant with the ball. He's been absolutely on a roll today, and importantly the way he's bowling onto the length, comparing with Basharat Manzoor, is bowling down the leg side more often, and he's given way too many extras to that. He's at least given away 9 or 10 wides until now, but Momin has been wicket to wicket. He's been absolutely brilliant as he goes over the stumps once again, up in the air and put down by the short cover fielder. Was a chance, and this could have been wicket number 4 for Momin and wicket number 5 for Shagoo Sports. Naveed Ganai, the culprit at short cover. He got both hands to the ball. The fielder at short cover puts down the catch. He got hands to it, but spells that one down. Next ball, that's a good delivery. And Momin has been unplayable today. He's bowled 3 overs, 3 wickets, 3 for 14. He could have 4 in his column, but the fielder at short covers, the previous ball, that penultimate ball, puts down the catch. And over number 5 ends with a dot, 31 for the loss of 4. And it is Lone Salim who has been given the reprieve, he's been given the life. He was trying to go up and over covers and find us that fielder, but unfortunately he puts the catch down, and he gets the life now. A bowling change for the first time. He's got Mohammad Salim to be bowling the final over of the power play. It was Mehraj Dar, the first man to depart. Ishfaq was the second one, and he can see the first wicket. That was clean bowled by Lone Momin today. He was dancing down the wicket, and the middle stump goes for the toss, and that was caught wheeling, and Momin has been, as I said, unplayable today. His 3 overs, he hasn't given anything to the batters of Rising Star Sopore. Incredible and astonishing display of fast bowling. And another talented fast bowler, Mohammad Salim, has got the ball in hand, and he will be bowling for the first time, and the final over of the fielder restrictions. Momin got 3 wickets, whereas Basharat got 1. And excellent job done by the fast bowling unit, by their premium fast bowlers, and they got to Mohammad Salim to bowl. He'll be bowling for the first time from the commentary box end. Right arm over the stumps he goes. First ball, and he taps it on the offside, riding the bounce well, and it goes to the short third man fielder. There is no addition to the total. We got Zia Dar and Jahangir Lone, Muhammad Iqbal, Shazib Mir, and he's watching from Behrampura. We got Shah Jahangir from Kupwara, and Shaukat Rafiq as well. It's Rising Star Sopore taking on Shagoo Sports in an important game of Janwara Cricket League. Salim for the second time, and down the track goes the batter, but he's nowhere to the pitch of the ball. It was a clever ball as Salim, he just senses that the batter was going down the track. He just pulls his length back, and there is no connection with the ball at all. Has been excellent with the ball. The control they have shown, the bowling with discipline, and that is why they completely managed to put brakes on the scoring rate. 31 for 4 as Salim goes for the third time. It's Salim versus Salim. Over the stumps he goes, and this time he pushes it further up to the batter. He waits for the ball to come, and Murtaza Hilal fumbles. It allows the batters to cross for a single, and it's very important from here on. You lost 4 wickets, and you just need to get those balls into the gaps here, those vacant spaces, especially after those power play overs, after those 6 overs. You'll have those gaps on offer, and it's important for the batting side to get those gaps, hit those gaps, and get things going on, and get those singles, doubles, and when you get a bad ball, try to punish those and get things going for you. As Salim goes again up to Shakir Butt, and up in the air, but in the gap, and Momin was diving, but fails to stop it on the first attempt, and he once again goes across quickly to stop the ball, but the batters had enough time to cross for 2 more runs, and 3 runs off first 4 bowlers of Mohammad Salim is over. The lines and lengths they are bowling
I could tell you that they haven't given anything to the batting side to work with, and they haven't given anything to the batters to score freely. As Salim goes once again for the 5th time, and a pacey delivery outside off stump. Doesn't time that one well, pushes that one straight to the point fielder who is inside the ring, and there is no chance of a single. 5.5 overs, 34 on board for the loss of 4 wickets. And you could simply say that it has been a dominant show with the ball, and the power play has completely, I could say, wholly and solely belonged to the bowling side. The way Momin bowled, the way Basharat and Salim operated in the power play, and I could say responding well. And down the track he goes again. A peel up a cord behind, and up goes the finger. Salim strikes final ball off his first over, and it's half of the side back in the pavilion. He was dancing down the track and gets the thin edge in routing to the keeper, and Salim has his arms aloft, and he has the wicket of the final ball of his first over. 6 overs completed, and inside those 6 overs they got those 5 wickets. They have got half of the side of rising star Sopore back into the pavilion. Incredible display of fast bowling, and I could say responding to the critics and responding to the skipper's choice of bowling first. It has been a commendable job done by the bowlers. It's Lone Momin leading from the front with the ball, picking up 3 wickets. I guess he's going to finish his spell here, and he's going to bowl those 4 overs on the trot. 3 wickets for 14 runs. And Basharat Manzoor has got wicket as well, and Mohammad Salim of the final ball, he just takes the ball away from the right hander who was coming down the track, gets the thin edge, and the ball goes straight into the gloves of wicketkeeper. Fine display of bowling, 34 for the loss of 5. I could tell you there have been no demands on the wicket. This is a good wicket for the batters as well. The ball comes nicely onto the bat, but it has all been that bad shot selection, wrong shot selection, and it has led to the falter off, it has led to the downfall of the batting side. Shazib Mir, thank you very much, brother, is watching from Barampura with Isa, and Mir Roof Janwara as well. It will be the 7th over. We'll have to wait and watch. Can they go with their attacking fielder set, or will they go with those 5 fielders outside the 30-yard circle? At the time I could see 5 fielders, Basit at long on, 1 man at deep scare leg, 1 at fine leg, and on the offside he's got deep cover and long off out. Rest of the fielders are inside the ring to save the singles as Momin goes with the first ball of his final over. He's bowled 3 overs, has been an excellent spell for him today, terrific bowling spell, 3 overs for 14 and 3 wickets as well. And the new batter who is in, we'll have to wait and watch, is Momin with the first ball of his final over onto that pad line, and he works it nicely to the fine leg. He's got a protection there, he's got a man riding at the boundary, patrolling the boundary. Just a single takes them to 35 for 5. Lun Gudu and Shakir Butt. I was telling you before that the batters need to get their eyes in first. You just need to step up and bat deep, but unfortunately it has backfired, and they have lost wickets at regular intervals. Momin for the 2nd time, and outside off stump he just invites the batter to go for the drive, and he was trying to drive it on the up. This time again it has been a whole lot story for the batters. It has been a nightmare for the batters batting out there. Runs completely dried up, and kept losing wickets, and absolute pressure they are in. Ashik Mehtab and Shanawaz Mullah Latif and Mr. Nisar Ahmed Khande Saab also watching and enjoying the game. And thank you each and every viewers for providing your love and support and sharing the live broadcast. And Momin once again, he just tries to find that stumps. That is why he's bowling up to the batter, and he's giving a bit tough times to the batters. He's just inviting him, just go and hit me down the ground here mid-off inside the ring, and he's just trying to bring that ball back into the right-hander. Once you miss it, and it could be a big trouble for the batters. And at the last moment he just pushes the ball on the onside, gets the single.
Momin in the middle of a phenomenal spell once again. A beauty of a delivery, a beautiful ball as it goes away from the right hander. He was hanging in his bat in the air and it goes mighty close to the outside edge into the gloves of wicketkeeper. Very noble number 7, and it is 36 for the loss of 5. Just 2 to go in this over, and Momin will finish his quota. And economical and wicket-taking stuff with him as he goes once again. Fuller in length, he goes down the ground, over long gone, and that is a massive 6. Momin bowling the slower delivery, and he was waiting for it, Shakir, but he picks that one early, and he was picking the length, and he picks bones out of this one and absolutely deposits that one into the stand as for a biggie. Massive strike off the bat, and finally breaking the shackles. Shakir, he was itching to go big, and before that ball he's faced with 12 balls and just 4 runs, and now he goes downtown, goes for a mighty 6 over long on. Takes on Lon Momin, he's got the final ball. It's 42 for 5. For the final time in his spell, Lon Momin is making changes in the field. That fine leg fielder goes to deep backward scare as he goes for the final time to Shakir. Wraps him on the pad and he's appealing for LBW. Up goes the finger, and final ball of the spell, he strikes. He was dead in front, and look at that in replays as well. And Momin, he was appealing, he was up straight away as the ball wraps him on the pad, and no chance at all. He was right in front of the stumps. Momin breaks through of the final ball of his spell. He's got 4 wickets today. His spell comes to culmination. 4 overs, 4 for 22. It is 6 down on just 42. Serious problems in the batting department for Rising Star Sopore, and nothing going right for them, and everything Lon Momin is touching today is turning it into golden dust. Phenomenal spell for the skipper, and stepping up to the occasion, rising to the occasion. He has got 4 wickets today, 4 for 22, and Rising Star Sopore going nowhere. 42 for the loss of 6. शुक्रिया फिरदौस। तो थोड़ा क्लोज से जो है, क्लोज एंगल से आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से ये विकेट गिरी। ये आप थोड़ा जो है जूम करके देख सकते हैं किस तरह से LBW करार दिया गया यहाँ पर बल्लेबाज शाकिर भट्ट को। और शाकिर भट्ट जी, बिल्कुल अंपायर का फैसला बिल्कुल सही हमें भी लग रहा है। बिल्कुल जो है विकेट में आती हुई गेंद जो है पैरों के साथ टकराई और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी उंगली फिजा में बुलंद की अंपायर ने। तो 6ठी विकेट गिरती हुई 42 के मजमूई स्कोर पर, और गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए तमाम बल्लेबाज राइजिंग स्टार सोपोर के। लोन मोमिन ने अपने खाते में 4थी विकेट जो है जोड़ दी और 4 ओवर किए, 22 रन दिए और 4 विकेटें हासिल की लोन मोमिन ने। मोहम्मद सलीम आए हैं बॉलिंग मार्क पर। 7 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 42 स्कोर, 6 विकेटों के नुकसान पर। मोहम्मद सलीम अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद के साथ, और ऑफ स्टंप से बाहर गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। अब्दुल अजीज राथर हमारे साथ विजर वागोरा बारामूला से जुड़े हैं, शाहजेब मीर बहरामपुरा से एम अशरफ के साथ, और इनके साथ साथ बेग मुश्ताक भी हमारे साथ जुड़े हैं त्राल से। मीर बशारत जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरशद परे जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इनके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं गुजरात से शाहनवाज मल्ला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सलीम, अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर उछाल लेती हुई गेंद, आखिरी लम्हात पर अपना बल्ला पीछे खींचा बल्लेबाज ने और गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों के लिए। लोन गुड्डू और मोहम्मद अजहर इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। आशिक मेहताब लिख रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट प्ले फील्ड, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशिक मेहताब हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब्दुल अजीज राथर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ राइजिंग स्टार सोपोर की टीम जो है वो शदीद दबाव का शिकार, 6 खिलाड़ी पेविलियन वापस जा चुके हैं 42 के स्कोर पर। अब देखना होगा क्या कोई बल्लेबाज जो है विकेट पर ठहर जाएगा, एक पार्टनरशिप को बिल्ड करने में कामयाब होंगे, ये देखना होगा। ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से, स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन के साथ 43, 6 विकेटों के नुकसान पर। मोहम्मद सलीम बॉलिंग मार्क पर है, अपना दूसरा और पारी का 8वां ओवर फेंक रहे हैं। इससे पहले लोन मोमिन ने बेहतरीन
जो है गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए अपने 4 ओवर्स में 22 रन दिए और 4 विकेटें हासिल की। पूरी तरह से जो है कमर तोड़ के रख दी लोन मोमिन ने अपने स्पेल में राइजिंग स्टार सोपोर की। 43 स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर 8वें ओवर का खेल जारी। शाहिद नज्जार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजीर सोपोर और वानी इमरान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली गेंद ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया। इस मरतबा थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद विकेट कीपर सफाई के साथ रोक नहीं पाए। गेंद स्लिप की जाने गई जहां पर गेंद को फील्ड किया गया। रन बनाने का कोई मौका नहीं। 8वें ओवर का खेल जारी है और मजमूई स्कोर है 43, 6 विकेटों के नुकसान पर राइजिंग स्टार सोपोर का। लोन गुड्डू और मोहम्मद अजहर इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक पार्टनरशिप को बिल्ड करने की जरूरत है। कम से कम 5 या 6 ओवर्स तक अगर पार्टनरशिप टिकी रहे विकेट पर तो कहा जाएगा कि फिर राइजिंग स्टार सोपोर की टीम जो है एक अच्छे टोटल की जानिब जाएगी। मोहम्मद सलीम हमसे दूर भागते हुए अंपायर को क्रॉस किया। इस मतबा गेंद को खेल दिया। थर्ड मैन मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का मौका, 1 रन हासिल। इत्मीनान के साथ 1 रन मुकम्मल होता हुआ 44 स्कोर बढ़ता हुआ 6 विकेटों के नुकसान पर मोहम्मद सलीम आहिस्ता आहिस्ता अब बॉलिंग मार्क की जाने वापस जाते हुए। शाहजेब मीर ईसा के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। वानी इमरान जुड़े हैं। शाहिद नज्जार जुड़े हैं। नजीर सोपोरी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और जैद कंप्यूटर्स का खरालगुंड काजी आबाद से भी हमारे साथ जैद बशीर जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली गेंद ऑप्शन से बाहर, आखिरी लम्हात पर बल्ला दिया था। खुशकिस्मत रहे, बल्ले बिल्कुल बल्ले के बाहरी किनारे के करीब से होती हुई गेंद जो है विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। मोहम्मद सलीम आहिस्ता आहिस्ता बॉलिंग मार्क की जाने वापस जाते हुए अपने ओवर में आखिरी गेंद के साथ सामना करेंगे उनकी गेंद का मोहम्मद अजहर, जिन्होंने अभी तक अपना खाता नहीं खोला। जबकि लोन गुड्डू जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर है, उन्होंने 2 रन बनाए 6 गेंदों का सामना करते हुए। मोहम्मद सलीम हमसे दूर भागते हुए 15 या 16 कदमों का रनअप मोहम्मद सलीम का। अंपायर को क्रॉस किया। गेंद की रफ्तार को कम किया था और गेंद जो है ऑप्शन से थोड़ी बहुत बाहर, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर मुकम्मल, 8 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 44 स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। दबाव बहुत ज्यादा जो है बल्लेबाजों पर, क्योंकि 6 खिलाड़ी पेविलियन वापस जा चुके हैं और अगर हम रन रेट की बात करें तो वो भी 6 से कम है। शाहजेब अमान एजाज हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और शौकत अहमद हमारे साथ जुड़े हैं शाह गुंड से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बांडे फैयाज भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इस लाइव नशरियात को जरूर शेयर कीजिएगा। आपको रिप्ले में हम दोबारा से दिखाना चाहेंगे किस तरह से LBW हुए थे शाकिर भट्ट। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा क्लोज एंगल से हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से शाकिर भट्ट जो है वो LBW करार दिए गए थे। मोमिन मलिक हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदिपुरा सोपोर से हमारे साथ जुड़े हैं खजर मोहम्मद मलिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तौहीद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तौहीद मीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कुल मिलाकर राइजिंग स्टार सोपोर का स्कोर 44, 6 विकेटों के नुकसान पर। इस अहम मुकाबले में सज्जाद अहमद को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर। सज्जाद अहमद अपना पहला और पारी का 9वां ओवर फेंकेंगे शगू स्पोर्ट्स की जानिब से, जबकि सामना करेंगे उनकी गेंद का लोन गुड्डू, जिन्होंने 2 रन बनाए, और सामना करेंगे सज्जाद अहमद की गेंद का। सज्जाद अहमद टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी जो कि बॉलिंग मार्क पर है। फील्ड तरतीब दी जा रही है और यहां ऑन साइड पर 3 खिलाड़ी जो तैनात किए गए हैं। तीनों के 3 खिलाड़ी जो है वो दायरे से बाहर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर, और ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर 1 खिलाड़ी, जबकि डीप बैकवर्ड पॉइंट पर 1 खिलाड़ी तैनात। गेंद की इस मरतबा ऑन साइड की तरफ गेंद को खेला, हवा में शॉट, एक टप्पा खाने के बाद गेंद सीधे फील्डर के हाथ में जाती हुई। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन मुकम्मल किया। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45, 6 विकेटों के नुकसान पर। तौहीद वीर लिख रहे हैं आउटफील्ड इज लुकिंग गुड, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोमिन मलिक भी हमारे साथ जुड़े हैं तौहीद मीर के साथ। सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव नशरियात में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली गेंद ओवर द विकेट, फ्लाइटेड, गेंद का इंतजार किया, बैट और पैड साथ मिलाते हुए गेंद को वापस बॉलर की जानिब खेला मोहम्मद अजहर ने। 45 स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर 9वें ओवर का खेल जारी। बॉलिंग मार्क पर है सज्जाद अहमद।
अगली गेंद ओवर द विकेट, एक मतलब फिर फ्लाइटेड गेंद का इंतजार किया, गेंद को खेल दिया लेकिन फील्डर को जो है बीट नहीं कर पाए और फील्डर पॉइंट पर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। एक मतलब फिर डॉट गेंद और हर डॉट गेंद के साथ प्रेशर जो है बल्लेबाजों पर बढ़ता हुआ। अगली गेंद इस मतलब ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश, जोरदार अपील, लेकिन गालिबन गेंद जो है पहले बैट को छू गई, उसके बाद उनके पैड को ऐसा इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से। कोई नुकसान नहीं राइजिंग स्टार सोपोर के लिए। 45 6 विकेटों के नुकसान पर सज्जाद अहमद एक मतबा फिर ओवर में 5वीं गेंद के साथ। अभी तक इस ओवर से सिर्फ एक रन आया है, ऑफ स्टंप से बाहर जाने दिया, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से। स्कोर बढ़ता हुआ एक इजाफी रन के साथ 47 6 विकेटों के नुकसान पर राइजिंग स्टार सोपोर का। क्या कोई बल्लेबाज जो है एक आतिशी पारी खेलेगा जो इस टोटल को जो है आगे बढ़ाएगा? इस दौरान गेंद को खेला लॉन्ग ऑन की जानिब, लॉन्ग ऑन बाउंड्री से फील्डर आए, एक रन बनाने का मौका। मोहम्मद सलीम ने फील्डर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, बल्कि बासित फील्डर थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया तो एक रन का इजाफा स्कोर में। स्कोर बढ़ता हुआ 47 हो चुका है 6 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस ओवर की फेंकेंगे सज्जाद अहमद। वगे महराज हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कदमों का इस्तेमाल, गेंद को खेल दिया, हवा में शॉट, लेकिन उस ओर फील्डर तैनात नहीं और गेंद सीधे कवर बाउंड्री को छूती हुई 4 रन के लिए। यह चौका आता हुआ यहां बल्लेबाज लोन गुड्डू के बल्ले से और स्कोर बढ़ता हुआ 51 6 विकेटों के नुकसान पर। कदमों का सही इस्तेमाल किया और गेंद को खेल दिया 4 रन के लिए। तो 4 रन के इजाफे के साथ स्कोर 51 हो चुका है 6 विकेटों के नुकसान पर। मीर रूप जानवारी हमारे साथ जुड़े हैं, शाकिर नजीर मीर कुछ लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। वगे महराज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 9 ओवर्स का खेल मुकम्मल। अब जो है नवीद गनाई को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर। It's 51 for the loss of 6 and gone to Naveed Ganai. He'll be bowling from the commentary box, and Lungudu batting on 7 of 8 and Mohammad Azhar on a solitary single. It'll be Azhar, he'll be facing Naveed Ganai. For the first time he goes over the stumps and outside edge flies down to the third man region. Moomin was diving over the ball but cannot stop it and it runs away down to the third man boundary for 4. First ball off the spell and Naveed Ganai concedes a boundary, takes the score to 55 for the loss of 6. It was outside off stump and that wasn't deliberate. The batter was trying to push it on the offside, gets a genuine outside edge and it rolls to the third man. Shot third man was inside the ring, even though Moomin tried his level best. He was diving but unfortunately cannot get to the ball, goes down to the boundary. Next ball and this one is a batter line, he's close to the off stump and the batter just pushes it away on the offside, cannot beat the fielder inside the ring though. He's at backward up point and there is no addition to the total. We're at the halfway stage of the first innings in over number 10 and 55 on board. Naveed goes again, a slower delivery outside off stump. He's got a good slower ball. He's a master in that, bowling those slower deliveries. And Bilal Habib, it is happy to see Lon Guru playing all over the valley and he is here for me. In the meantime Naveed goes again, slower and wider outside off stump, but this time it's wavered and has been signalled as wide. Moomin Malik, thank you very much brother, and Hazikul Islam. It's here at Janwara Sports Field, Sopore, Shahbaz Batitis, Walaikum Salam and Wage Mehraj. Here is Naveed once again and the batter is solid in defence. He waits for the ball to come and drops it on the offside, drops his wrists as well, goes to cover and there is no addition to the total. As I told you, we're at the halfway stage and all those 10 overs have been absolutely dominant by Shagoo Sports and they're bowled exceedingly well. Naveed goes again and all the batter can manage is just guide it with an open face and he finds the fielder once again. Has been the problems for the batters and you get stuck out there in the middle. You don't find those gaps and ultimately pressure builders on you. You cannot find those vacant spaces on the offside, on the onside and that creates a lot of pressure on the batters. And this time he is a bit clever as he waits for the ball to come, turns it on the onside, nicely turns it away, needed a direct hit
and this could have been a close call, but the batters turning for that second. They have completed that. 10 overs gone. It's 58 for the loss of 6. Going with a below-par run rate 5.8 in a T20 game, you cannot always justify that. But as has been irresponsible batting, they were in a hurry. They were just rushing at the bat bowlers. As a result, they kept losing wickets, and you can see they're finding themselves in tatters. They're finding themselves in big trouble. 6 wickets down, just 10 overs have been bowled, and you could see just 58 runs on board. In Momin Malik and Shabir Ahmed Lone and Ishfaq Ahmed. Walaikum Salam Ishfaq, welcome to the live stream. So batting from both ends, we could say 5 overs they're batting from the commentary end, and then 5 overs they're batting from the far end. Now next 5 overs the bowling will be from the far end, and the batting will be from the commentary box end. And 10 overs, 58 for 6, and this has been a whole lot story of the innings until now. Shagoo Sports inviting Rising Stars Cricket Club Sopore to bat first. It was Momin. He was breathing fire, he was wrecking havoc, and he completely demolished the top order. And in the very first over he got 2 wickets back to back, and then in the third over he got a wicket as well. Basharat Manzoor got his name in the wickets column. Then Mohammad Salim was brought in, and in the first over of the final ball he got the wicket, and Momin bowling 4 overs on the trot, and the final ball yielding a wicket as well. So he's got 4 wickets, 1 in the name of Basharat, 1 to the name of Mohammad Salim. Those 6 wickets were back into the pavilion at this stage. The officials have called for a short drinks break, and there is a time for Rising Stars Sopore to recapitulate and rebuild the innings once again, to rethink their strategy, as the batters have completely failed. And this is the replay of the first wicket, and there is Lone Momin completely clean bowling. The batter was backing away, and the ball sneaked through bat and pad and just clips the bails, and he was able to get rid of the batter in the very first over of the game. And I could say at this stage, Shagoo Sports Sopore are at the driver's seat, and they're driving the game nicely. They have been absolutely terrific. This is wicket number 2, and he got wickets of back-to-back deliveries. And this was a nothing shot. He was facing the first ball of his game, and he was swinging blindly, and he was just finding his middle stump disturbed. So these 2 wickets in the very first over. 10 overs, 58 for 6. शुक्रिया फिरदौस। तो पानी का वक्फा जो है यहाँ पर जारी है, और इस दौरान 10 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। 56 मजमूई स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए राइजिंग स्टार सोपोर का। वारिजाज हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इशफाक अहमद, शब्बीर अहमद लोन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपके साथ साथ मोमिन मलिक भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिलाल हबीब भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बिलाल हबीब जो है लोन गुड्डू के लिए कुछ अल्फाज लिखे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाजिकुल इस्लाम भी हमारे साथ जुड़े हैं, शाहबाज भट्ट के साथ शाकिर नज़ीर जुड़े हैं मीरूफ जानवारी के साथ, बल्कि शाकिर नज़ीर के लिए कुछ अल्फाज लिखे हैं मीरूफ जानवारी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कुल मिलाकर 58 है यहाँ पे स्कोर, 6 विकेटों के नुकसान पर 10 ओवर्स का खेल मुकम्मल। नवीद गनाई ने अपने पहले ओवर में 7 रन दिए। मोहम्मद अजहर 7 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 12 गेंदों का सामना किया, जबकि लोन गुड्डू ने 7 रन बनाए 8 बल्कि 9 गेंदों का सामना करते हुए। तो पानी का वक्फा जो है मुकम्मल होता हुआ मीर पावर टेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुजफ्फर डार भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मजीद 10 ओवर्स का आना बाकी है, और देखना होगा ये जोड़ी जो है कितनी देर तक विकेट पर ठहरी रहेगी, और क्या टारगेट यहां पे सेट होता है इस अहम मुकाबले में शगू स्पोर्ट्स सोपोर के लिए। जहांगीर मीर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी सराहना के लिए, और कुछ अल्फाज लिखे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और
हैदर बिलाल भी हमारे साथ जुड़े हैं, डार मुदस्सिर जुड़े हैं, अयाज गुल हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब जो है बॉलिंग मार्क पर नवीद गानाई जो है उनका ओवर मुकम्मल हो चुका है। अब देखना होगा 11वें ओवर में किस गेंदबाज को बुलाया गया है। गालिबन सज्जाद अहमद जो है 11वां ओवर फेंकेंगे और उनका एंड जो है बॉलिंग एंड तब्दील किया गया है। सज्जाद अहमद फ्लाइटेड गेंद, कदमों का इस्तेमाल और बाकी का काम तमाम किया विकेट कीपर ने। वो आपको रीप्ले में दिखाना चाहेंगे, कदमों का इस्तेमाल किया था लेकिन गेंद की पिच तक पहुंच नहीं पाए और विकेट कीपर ने तीनों विकेटें जो है जमीन पर गिरा दी। तो एक और विकेट गिरती हुई मोहम्मद अजहर के रूप में। तो कुल मिलाकर जो है ये 7वीं विकेट गिरती हुई यहां राइजिंग स्टार सोपोर की 7वीं विकेट गिरी है। और शब्बीर अहमद लोन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी सराहना के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर 7 विकेटें गिर चुकी है 58 के मजमूई स्कोर पर राइजिंग स्टार सोपोर की। लोन अजहर वहां जो है पेविलियन सर झुकाते हुए बोझल कदमों के साथ पेविलियन वापस जाते हुए। शबीर अहमद लोन, अयाज गुल, डार मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो 7 विकेटें गिर चुकी है 58 के मजमूई स्कोर पर। राइजिंग स्टार सोपोर की टीम इब्तिदा से ही जो है लड़खड़ाई और अभी तक जो है संभल नहीं पा रही है राइजिंग स्टार सोपोर की टीम। हालांकि लोन अजहर और लोन गुड्डू के दरमियान कहा जाएगा कि कुछ ओवर्स जो है उन्होंने ये विकेट पर लिए, लेकिन अब जो है मोहम्मद अजहर की विकेट गिरती हुई उन्हें स्टंप आउट किया। यहां सज्जाद अहमद के खाते में जाने वाली विकेट। नए बल्लेबाज पेविलियन से नमूदार हुए हैं और इस दौरान अयाज गुल हमारे साथ जुड़े हैं इरफान मीर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया बांडीपोरा से अयाज गुल। और इस मतलब रिवर्स स्वीप और गेंद देखना होगा क्या 6 रन के लिए, जी हां 6 रन के लिए ये गेंद जाती हुई। और ये जो है यहां कहा जाएगा कि जिगर रखते हैं, इस तरह का स्ट्रोक खेले। पहले से ही टीम जो है दबाव में है और इस तरह का स्ट्रोक खेला आप रिप्ले में देख सकते हैं और 6 रन हासिल किए। बल्लेबाज है उमर सैदुल्ला है बल्लेबाज जिन्होंने ये छक्का हासिल किया। तो अब स्कोर बढ़ता हुआ 64 हो चुका है 7 विकेटों के नुकसान पर। सज्जाद अहमद एक मरतबा फिर उमर के लिए, इस मरतबा गेंद को ऑन साइड की तरफ खेल दिया। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता मिड विकेट बाउंड्री पर 1 रन बनाने का मौका, 1 रन हासिल। दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी के साथ इत्मीनान के साथ 1 रन मुकम्मल किया। आशिक लोन काजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं, कालगुंड काजियाबाद से। और हाशिम महराज मीर कैप्टन ऑफ एफसीसी आदिपुरा। उमर सैदुल्ला लिख रहे हैं जो कि इस वक्त बल्लेबाज है। सज्जाद सैदुल्ला के लिए, बल्कि इस मरतबा गुड्डू के लिए, लोन मोहम्मद अजहर के लिए। और गेंद जो है जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन बनाने का मौका। उमर सैदुल्ला जो है वो सामना करेंगे अब सज्जाद अहमद की गेंद का। 66 है मजमूई स्कोर। क्रॉस बैट से ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन नाकाम और गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। कुल मिलाकर 11वें ओवर का खेल जारी। सज्जाद अहमद अपना दूसरा ओवर फेंक रहे हैं, उनके खाते में जाने वाली 1 विकेट। अगली गेंद फ्लाइटेड, पहले से ही विकेटें छोड़ दी थी और एक मतलब फिर गेंद जो है विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। ओवर मुकम्मल। सज्जाद अहमद का 11 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। मजमूई स्कोर 66, 7 विकेटों के नुकसान पर। राइजिंग स्टार सोपोर का अभी भी 9 ओवर्स का आना बाकी। कुल मिलाकर 54 गेंदों का खेल आना बाकी है। क्या राइजिंग स्टार सोपोर की टीम मुकम्मल 20 ओवर खेलने में कामयाब होगी, ये देखना होगा। अजू अजहर हमारे साथ जुड़े हैं, इस दौरान आमिर मीर भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप हमारे साथ जुड़े हैं। आशिम मीर भी हमारे साथ जुड़े हैं, आमिर मीर भी जुड़े हैं अजू अजहर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मोहम्मद अजहर सामना करेंगे नवीद गनाई की गेंद का। 12वें ओवर की पहली गेंद, बैट और पैड साथ मिलाते हुए गेंद को खेला मोहतात अंदाज से
रन बनाने का कोई मौका नहीं, अपने फॉलो थ्रू से आगे गए नवीद गनाई और गेंद को फील्ड किया। मजमूई स्कोर 66, 7 विकेटों के नुकसान पर। मोहम्मद शब्बीर हमारे साथ जुड़े हैं। फ्रॉम लास्ट 3 years द ग्राउंड वाज अंडर मेंटेनेंस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दिस गेम हैव बीन स्टार्टेड हियर। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। ये मीर शब्बीर हमें जानकारी दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमें और हमारे व्यूअर्स को ये जानकारी देने के लिए। बड़ा खूबसूरत मैदान है और T20 खेल के लिए कहा जाएगा कि मवाफिक मैदान। नवीद गनाई अगली गेंद ऑप्शन से बाहर, गेंद को खेल दिया है लॉग ऑफ की जानिब। फील्डर गेंद के पीछे देख रहा होगा, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब, गेंद को रोकने में कामयाब और इस दौरान दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज। दूसरा रन भी मुकम्मल, तो 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ अब 68 हो चुका है, 7 विकेटों के नुकसान पर। अजू अजहर बहुत बहुत शुक्रिया। मैच इस वक्त जानवारा स्पोर्ट्स फील्ड पर जारी है। नवीद गनाई पारी का 12वां ओवर फेंक रहे हैं, इनफरादी तौर उनका दूसरा ओवर। अगली गेंद इस मरतबा उमर के लिए और गेंद को खेल दिया हवा में शॉट, लेकिन महफूज। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, 1 रन बनाने का मौका, 1 रन हासिल। तो 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ 69, 7 विकेटों के नुकसान पर। अब उमर सैदुल्ला जो है वो सामना करेंगे नवीद गनाई के ओवर की 5वीं गेंद का। अभी तक इस ओवर से 3 रन आए हैं। तारिक वानी बहुत बहुत शुक्रिया डंगी वच्छा से हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शाहिद रईस भी हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद यूसुफ के साथ। अगली गेंद नवीद गनाई की ऑप्शन से बाहर, बड़ा खूबसूरत शॉट। फील्डर गेंद के पीछे देखना होगा, गेंद की रफ्तार उनकी रफ्तार से तेज और गेंद बाउंड्री लाइन पार, 4 रन के लिए। और पहला स्ट्रोक यकीन मानिए इस मुकाबले में हमने देखा जो इत्मीनान से भरा हुआ स्ट्रोक और जो लग रहा था कि एक मंजे हुए बल्लेबाज के बल्ले से आने वाला स्ट्रोक। तो 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन को छूते हुए और 4 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 73, 7 विकेटों के नुकसान पर। एक मतबा फिर उमर सैदुल्ला सामना करेंगे गेंद का। इस मतबा गेंद को खेल दिया, फील्डर मौजूद, रन के लिए आगे गए थे लेकिन वापस क्रीज तक आने में कामयाब और अब ओवर थ्रो की सूरत में रन हासिल होता हुआ। ओवर मुकम्मल। नवीद गनाई का कुल मिलाकर 8 रन आए इस ओवर से, 74 स्कोर, 7 विकेटों के नुकसान पर। 12 ओवर्स का खेल मुकम्मल। And let me tell you that in those 12 overs, for the first time, the run rate has gone past 6. It's 74 for the loss of 7 wickets, and on the verge, on the brink of being bundled out inside their 20 overs. But Umar Saidullah is just showing his heart. He can bat, and he is batting on 12 with a healthy strike rate, and he's got Mohammad Azhar batting on 11. Naveed Ganai 2 overs, none for 15. We got Salim Khan, Jahangir Lun, Shahid Reis, and Walaikum Salam Shahid. And we got then couple of overs, Mohammad Yusuf, Tariq Wani, and Azu Azhar enjoying the game as well. All watching on Facebook Global News Network, and you can enjoy the game on YouTube's JK Sports Discovery as well. 13th over begins, and Sajjad has got the ball in hand. 2 overs, 1 for 15 to his name with the first ball, and he tries to go for the switch hit and works it down to that deep cover region. We'll get a single though. He was just changing his grip as well. He knows that Sajjad is just trying to take the ball away from him. He's turning, he's making the ball to turn away from the right-hander. And he turns before the ball was bowled and switch it to that one down to that sweeper area. And once again, that's a wonderful shot. Improvisation, and goes over third man down to the boundary for 4. You know, that is the one way you can play that leg spinner if he's bowling slow through the air. And giving a ball bit air, tosses that one up to the batter. And batter knows the thing that this one is going to turn away from you, and he switches that one, reverse sweeps that one fine off that third man fielder and into the boundary for 4. Wonderful improvisation and innovation at its best. Moves to 79. Sajjad goes once again, flights, and he sweeps him beautifully. Dribbles away down to the sky-leg boundary for 4. Back-to-back boundaries, and he's continuously tossing that one up. He's bowling it nice and full, and this time the batter sits down and nails that sweep wide up that sky-leg fielder and into the boundary for 4. 83 for 7. Some respite, some momentum to the innings by these two batters. Sajjad goes once again,
And fuller and wider outside off stump. Easy pickings for the battery. Nicely picks that one away. Keeps it down to deep cover. And will get a single. Excellent over for Rising Stars Sopore. 2 boundaries, 2 singles. 10 coming off this. 84 for 7. In the meantime, Sajjad goes once again. Down the track goes batter. He slogs that one. Up in the air. Over Scarrick for 6. That wasn't timed well, but he gets enough wood behind the shot as it sails over Scarrick boundary. 6 coming and 16 off this over. An expensive one off the innings. And Sajjad is giving that raise, providing that way to the batters to score runs. Once again, and Umar Saidullah was trying to go big. He was trying to go for the slog, doesn't connect, and has been gathered behind the stumps. 13 overs gone, and now going nearly 9, 7 runs per over, 90 for the loss of 7. And this partnership is surely infusing life into this game. They look done and dusted at 60 for 7, but these two have batted so well. And you got to give credit to Umar Saidullah for his fantastic hitting abilities. He is 19 of just 9 bowlers. And he is, as I said, he is just infusing life into this game. He is giving that momentum to the innings of Rising Stars Sopore. They were looking done and dusted. Has been a fantastic power hitting again as the spin bowling. And Sajjad conceding 16 runs in the previous over, 2 4 6 as well, and couple of singles. Optimistic Rizwan is watching from Harvan Sopore, Salim Khan as well, and Azad Rafi Abadi watching from Gantamullah Baramulla. Walaikum salam, and we warmly welcome you to the live stream. And they gone to Basharat Manzoor as the captain of the side. You know, you cannot let the game to slip away. You've done all the hard work. You got those 7 wickets. And you should try to go for the kill from here on. You should try to pick up those wickets as soon as possible. So you'll be chasing a low score. And you don't give batters a freedom to score freely. In the previous over, Sajjad has done so. He's given away way too many runs. It'll be Basharat Manzoor with the first ball off his new spell. He bowled 2 overs in the power play, got wicket as well. And it will be Muhammad Azhar to face him for the first time. He's got fine leg in. Deep scare. And driven on the up nicely down to mid-off. Will steal a single and a misfield there, but the batters doesn't think of second. They're happy with a single. 91 for 7. 7 more overs to go. And I guess it will be a plus point for the batting side if they can play those full coat of 20 overs. Looks very tough from here on. Won't be easy again as this quality bowling side. Next ball onto the legs and just pushes that one on the onside for a single. He could do the job with singles as well. You got up to nearly 100 runs on board, and you lost 7 wickets. It's important for the batters. These two. There's a crucial partnership, an important partnership going on between them. And they will love to go till the end. They will love to bat deep as much as they can. As Basharat goes once again, dug in short, but he wasn't comfortable at this one, and he tamely pushes that one on the onside, although he will get a single and will take that. And they need runs no matter where they come from. And just pushes it on the onside, scampers through for a single. He got 3 singles of 3 bowlers, so for me they have done the job in this over. As I said, it's important for them to rotate the strike with Bat Nazir and Mir Mudassir. Walaikum salam, Mir. Welcome to the live stream. As Basharat goes over the stumps once again, wraps him on the pad. This looks close, and yes, it is. Umpire is raising his finger. Nothing the batter could have done about that. You could see uneven bounce. And the ball capped to low, and he was wrapped on the pad, and it was heading to the stumps. A good decision and from the umpire, and you could see it's an absolute heartbreak for a batter. The ball keeping low, and he wasn't able to get his bat down on time. Gets wrapped on the pads, and umpire had no hesitations. He just raises his finger and marching orders to the batter. He just walks back to the pavilion, heads down. He looks dejected, and he knows that that really was unfortunate way to get out. You're getting a close-in angle, and you can see he was little shuffling across, but it was going on to hit the stumps as well.
given though the ball was keeping low, it was very low, and the batter wasn't able to cover the line. He misses, and umpire raises his finger. Basharat has his second of the day, and he was brought on to break the partnership, and living up to the expectations of the captain, he has delivered and is broken the stand, which was proving to be threatening, which was trying to take the game away, which was trying to get those runs on board. It's wicket number 8 which has gone down. 93 for 8 it is after 93 for 8. Just 2 more wickets to get Shagoo Sports. As Basharat Manzoor, new batter, is in at number 10. Over the stumps to the new man he goes, and he is attacking the stumps, but at the last moment he just pushes that one back to the bowler. He was jumping on toes, and Basharat fielders it on his follow through. It's 14th over in progress. 93 for 8. They still have a chance to wrap them under 100, and they still have the chance if they get those 2 wickets very quickly, and they will be trying. So just give Mohammad Salim one more over from here on, so that they can try to finish things off down the leg side, and well gathered by the wicketkeeper behind the stumps. So Salim bowling those 2 overs, you got a chance to bring to get them all out. Why not try to attack as a bowling unit? Why not try to finish things off so early so that you could be chasing a low score? Has been a kind of a day for the batters, absolutely failing and not going up to the marks with the bat. That's a good ball, better length, better line, and you could see the batter was rooted to the crease. He gets beaten and the ball goes into the gloves of wicketkeeper. 14 gone. 94 for 8. शुक्रिया फिर दोस्तों, 14 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 94 स्कोर, 8 विकेटों के नुकसान पर शाकिर फैयाज नए बल्लेबाज आए हैं जिन्होंने अभी तक अपना खाता नहीं खोला, जबकि मोहम्मद अजहर ने 22 गेंदों का सामना करते हुए 22 रन बनाए। सईद खान हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मीर मुदस्सिर मीर हमारे साथ जुड़े हैं, इनके साथ साथ बट नज़ीर हमारे साथ सतलोरा रफ़ियाबाद से जुड़े हैं। शौकत चौफान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सलीम खान भी हमारे साथ जुड़े हैं ऑप्टिमिस्टिक रिजवान के साथ, जो कि हरवन सोपोर से हमारे साथ जुड़े हैं। आज़ाद रफ़ियाबादी घटमुल्ला बारामुल्ला से हमारे साथ जुड़े हैं। और सईद खान हमारे साथ जुड़े हैं, जी बिल्कुल। और हम तो यही कहेंगे कि बड़ा खूबसूरत मैदान है और T20 क्रिकेट के लिए बड़ा मवाफिक मैदान, और डायमेंशंस के एतबार से जो है T20 के लिए बिल्कुल सही मैदान। और यहाँ पर ज़रूर जो है हम ये कहेंगे कि खिलाड़ी आए और इस क्रिकेट लीग का हिस्सा बने। तो 15वें ओवर में मोहम्मद सलीम को बुलाया गया है। ऑप्शन से बाहर, फुल टॉस गेंद, बल्ला दे बैठे बल्लेबाज, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है 1 रन बनाने का मौका। हालांकि ऑप्शन से बहुत ज्यादा बाहर गेंद थी और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 95, 8 विकेटों के नुकसान पर। यह 15वें ओवर का खेल जारी है। क्या मुकम्मल 20 ओवर्स खेलने में कामयाब होगी राइजिंग स्टार सोपोर की टीम, ये देखना होगा, या फिर उससे पहले सिमट जाएगी टीम। ये सभी कुछ खेल के साथ साथ। और मोहम्मद सलीम है बॉलिंग मार्क पर। एम इकबाल बाकीपुरा रफ़ियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। आज़ाद रफ़ियाबादी भी जुड़े हैं, और इनके साथ साथ हमारे साथ जुड़े आयरस डार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 95 स्कोर, 8 विकेटों के नुकसान पर, और अब 96 हो चुका है स्कोर। 15वें ओवर का खेल जारी है। मोहम्मद सलीम अपना तीसरा और पारी का 15वां ओवर फेंक रहे हैं। अभी तक मोहम्मद सलीम ने 7 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। मोहम्मद सलीम लंबा बॉलिंग रनअप, 15 या 16 कदमों का रनअप मोहम्मद सलीम का। अंपायर को क्रॉस किया गेंद की, इस मतलब गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ की जानिब, लेकिन मिड ऑफ और फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। मोहम्मद अजहर और शाकिर फैयाज इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, और मोहम्मद अजहर ने 23 रन बनाए 24 गेंदों का सामना करते हुए। 96 है स्कोर, 8 विकेटों के नुकसान पर। 15वें ओवर का खेल जारी है। मोहम्मद सलीम अपने कोटे का तीसरा ओवर फेंक रहे हैं, और ओवर की चौथी गेंद के साथ एक मरतबा फिर मोहम्मद अजहर के लिए ओवर द विकेट। गेंद की पहले ही शफल किया ऑफसाइड की जानिब, और गेंद को खेल दिया जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। 1 रन बनाने का मौका, 1 रन हासिल, 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ 98। अब ओवर थ्रो की सूरत में दूसरे रन के लिए गए हैं, और दूसरा रन भी मुकम्मल होता हुआ
तो 98 मजमूई स्कोर 8 विकेटों के नुकसान पर। सईद खान बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यकीन मानिए हम सभी जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं जब इस मैदान में दाखिल हुए तो आते ही बड़ा जो है कहा जाएगा कि खुशी महसूस हुई कि बड़ा खूबसूरत मैदान और आउटफील्ड भी इस मैदान की काफ़ी अच्छी है। काफ़ी जो है इस मैदान की कहा जाएगा कि देखरेख हुई है, उस वजह से मैदान जो है बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है। अगली गेंद और इस मरतबा गेंद को खेल दिया। 1 रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज। मोहम्मद सलीम खुद ही गए गेंद को फील्ड करने के लिए और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 99 8 विकेटों के नुकसान पर। जानवारा क्रिकेट लीग का ये एक अहम मुकाबला इस वक्त जारी शगू स्पोर्ट्स और राइजिंग स्टार सोपोर के माबैन। कल यहां पे दिन में 2 मुकाबले खेले जाएंगे। आपको उन मुकाबलों के हवाले से भी थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहेंगे। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं बहुत बहुत शुक्रिया। इस मरतबा गेंद थर्ड मैन की जानिब जाती हुई, फील्डर कोई तैनात नहीं बल्कि रोकने में कामयाब। और इस दौरान जो है ओवर मुकम्मल होता हुआ कुल मिलाकर जो है 100 रन मुकम्मल होते हुए 15 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 15 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। 100 मजमूई स्कोर राइजिंग स्टार सोपोर का पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में और उनके 8 खिलाड़ी पेविलियन वापस जा चुके हैं। 8 खिलाड़ी पेविलियन वापस जा चुके हैं और कुल मिलाकर स्कोर है 100। और कल यहां पे जो है दिन में 2 मुकाबले खेले जाएंगे। सुबह 9 बजे सनसेबल स्टार्स बारामूला और अली इन्फा सोपोर के दरमियान मुकाबला होगा, जबकि दूसरे मुकाबले में गुंड ब्राट 11 और एमसीसी बांडीपोरा की टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबिल होंगी। दोबारा से आपको जो है कल के मुकाबले के हवाले से जानकारी देना चाहेंगे। कल सुबह सवेरे सनसेबल स्टार्स बारामूला का मुकाबला होगा अली इन्फा सोपोर के साथ, जबकि दूसरे मुकाबले में गुंड ब्राट 11 का मुकाबला होगा एमसीसी बांडीपोरा के साथ। ये जानवारा क्रिकेट लीग के तहत कल जो है मुकाबले खेले जाएंगे। और एम इकबाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए अल्फाज लिखने के लिए। और यहाँ जो है राइजिंग स्टार सोपोर के 100 रन मुकम्मल होते हुए 15 ओवर्स के इख्तिताम पर 8 विकेटें इस दौरान गिर चुकी है राइजिंग स्टार सोपोर की। अभी भी 5 ओवर्स का आना बाकी है। अगर मुकम्मल 5 ओवर्स खेलने में कामयाब हो जाती है टीम तो मजीद 30-35 रन जो है इस टोटल में जुड़ सकते हैं। अब बॉलिंग मार्क पर है बशारत मंजूर है बॉलिंग मार्क पर। और इस दौरान जो है स्कोर बढ़ता हुआ 101 102 बल्कि 102 8 विकेटों के नुकसान पर। शाकिर फैयाज 4 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 5 गेंदों का सामना किया शाकिर फैयाज ने। और महराज अयाज मीर हमारे साथ जुड़े हैं। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और दोस्त भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बसारत बॉलिंग मार्क पर है और सामना करेंगे उनकी गेंद का दाएं हाथ के बल्लेबाज शाकिर फैयाज। 8 विकेटें गिर चुकी है राइजिंग स्टार सोपोर की। 16वें ओवर का खेल जारी, 102 मजमूई स्कोर। बसारत की गेंद इस मरतबा पटकी हुई गेंद, लेकिन गेंद को खेल दिया ऑन साइड की जानिब। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन बनाने का मौका, 1 रन हासिल और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 103 राइजिंग स्टार सोपोर का इस विकेट पर पहले बल्लेबाजी करते हुए इस अहम मुकाबले में शगू स्पोर्ट सोपोर के खिलाफ। और बसारत मंजूर जो है बॉलिंग मार्क पर है। सामना करेंगे अब उनकी गेंद का मोहम्मद अजहर 26 रन पर खेल रहे हैं। अगली गेंद अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी बहुत बाहर, आखिरी लम्हात पर गेंद जो है बल्ले के बिल्कुल ऊपर से होती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। मुश्ताक नाइको हमारे साथ जुड़े हैं नौपुरा सोपोर से। महराज अयाज मीर हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मीर अयाज मीर भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये महराज अयाज मीर लिख रहे हैं जानवारा स्पोर्ट्स फील्ड इज ईडन गार्डन ऑफ कश्मीर, सच ए ब्यूटीफुल ग्राउंड ऑफ नॉर्थ कश्मीर। बहुत बहुत शुक्रिया। और गनाई जावेद भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अगली गेंद और इस मतलब हवा में खेला गया स्ट्रोक, यहां पे मौका एक और विकेट हासिल करने का। और विकेट गिरते हुए तो कुल मिलाकर 9 विकेटें गिर चुकी है 103 के मजमूई स्कोर पर। कॉट एंड बोल्ड किया यहां पर मोहम्मद अजहर को, जो अभी तक लग रहा था कि टॉप स्कोरर है अभी तक इस पारी में। और अब
एक खराब शॉट निकलता हुआ विकेट दे बैठे, कॉटन बोल्ड हुए बसारत मंजूर के हाथों। तो यहां 9वीं विकेट गिरती हुई अब आखिरी जोड़ी मैदान में राइजिंग स्टार सोपोर की 103 मजमूई स्कोर। अभी भी इस ओवर के बाद 4 ओवर्स का आना बाकी है और कुल मिलाकर 26 गेंदों का आना बाकी है। क्या मुकम्मल 26 गेंदें खेलने में कामयाब होगी राइजिंग स्टार सोपोर की टीम की आखिरी जोड़ी, या फिर उससे पहले जो है पारी सिमट जाएगी राइजिंग स्टार सोपोर की। फुरकान लेफ्टी आए हैं नए बल्लेबाज। फुरकान लेफ्टी सामना करेंगे बसारत मंजूर की गेंद का। 103 मजमूई स्कोर, 9 विकेटों के नुकसान पर राइजिंग स्टार सोपोर का स्कोर शगू स्पोर्ट्स सोपोर के खिलाफ। बसारत मंजूर ओवर में 5वीं गेंद के साथ अपने कोटे का आखिरी ओवर फेंक रहे हैं बसारत, और कुल मिलाकर जो है 24 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की बसारत ने। नाइको मुश्ताक, महराज अय्याज, मीर हमारे साथ जुड़े हैं। मीर अय्याज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गनाई जावेद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। 103, 9 विकेटों के नुकसान पर बाएं हाथ के गेंदबाज के लिए बसारत मंजूर राउंड द विकेट ओवर में 5वीं गेंद के साथ अंपायर को क्रॉस किया। गेंद की फुरकान के लिए बैट और पैड साथ मिलाते हुए विकेट कवर करके गेंद को खेला वापस बॉलर की जानिब। रन बनाने का कोई मौका नहीं। बसारत मंजूर ओवर में अब आखिरी गेंद के साथ 16वें ओवर का खेल जारी है। 103, 9 विकेटों के नुकसान पर मजमूई स्कोर है राइजिंग स्टार सोपोर का। गुलाम रसूल गनाई पांचला रफियाबाद से जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, हमारे रेगुलर व्यूअर है। और बसारत मंजूर अपने कोटे की आखिरी गेंद के साथ बाएं हाथ के बल्लेबाज फुरकान के लिए राउंड द विकेट। अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की और जाने दिया। आखिरी लम्हात पर गेंद को विकेट कीपर के दस्तानों के लिए फुरकान ने ओवर मुकम्मल। 16 ओवर्स का खेल मुकम्मल, मजमूई स्कोर 103, 9 विकेटों के नुकसान पर। आसिफ फरीक गुरेज से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। And they are just 1 wicket away to wrap up the first innings. 103 for the loss of 9. And Basharat finishing his spell. 4 overs, 3 for 22. Bowling has been excellent, each and every one. 103 for 9. And it will be the 17th over and Mohammad Salim's final over of his spell. Talk about the double-header tomorrow. We got Sensible Stars Baramulla taking on Ali Infra Sopore, the morning game at 9:30 a.m. And then the second game of the day will be Gundrat 11 taking on MCC Bandipora at 1:30 p.m. So these are the 2 games, the double-header of Janwara Cricket League coming tomorrow your way. In the meantime, Salim goes with the first ball, shot in wide outside off stump, and it's a wide ball. It's 104 for the loss of 9. It was always tough, lost 7 wickets in side 10 overs on 60 on board for those tail-enders to play those full court of overs. But in the middle, the partnership between Umar Saidullah and Azhar, it helped them to go beyond that 100 run mark. At that time it was looking really tough. But still got to give due credit to the bowlers. Shagoo Sports up and over infield. And Momin has got a job to do. He covers good ground, keeps the batters down to 2 only. 2 more runs have been scored on that. And Zuhaib Javed Lun. And Dilbar, he got a couple of overs as well. And Majid Nabi, thank you very much for joining the live stream. And Riazuddin, Mira Feroz and Asif Hooray watching us from Gurez. 106 for the loss of 9. Salim goes once again over the stumps away from us, and he tries to go for the scoop, doesn't connect at all. He was trying to be clever, but you see the bowler just bowlers a slower delivery outside off stump, and nothing given to the batter to get under the ball, and it goes close to the bat and into the gloves of wicketkeeper. 106 for 9 it is. In the meantime, Salim gets ready once again. He's 1 for 14 in his spell for the 5th time away from us, and he drives him down the ground to long off. Although the batters will get a single every run from here on, it's very crucial for the batting side. Or I can say every run they add on to the scoreboard, it will be a bonus for them.
And in his 3.3 overs, Salim has conceded 15 runs, has got a wicket. Basharat got 3 wickets. Muhammad, it was Lone Momin who got 4 wickets today. And Momin Malik mentioning that Furqan is a young and talented cricketer from Sopore. Step in, Walaikum Salam, and Zohaib Javed Lun, one of the finest all-rounders of Zanagir area, is also watching and enjoying the game. And Salim goes over to the lefty, and he's beaten all ends up. That is a beauty from Mohammad Salim, an absolute peach as the ball pitches and moves away from the left-hander and goes very close, inches close to the outside edge, and gone into the gloves of wicket-keeper. 16.4 overs, so it's a matter of time, need a one magical delivery to do the magic and to wrap up the first innings. Who's going to take that final wicket? Salim has got 2 left as he gets ready for the penultimate time. And he switches round the stumps and bowls and bowl him, gone through the gate. As I told you, who is going to take the final wicket, and he breaches the defence of the batter. Clean bowls him and puts the final nail in the coffin. We have got the final wicket. Shagoo Sports have bundled out Rising Stars on 107. So they need 108 runs to win in their allotted quota of 20 overs. So do join us after a short little break with the chase. Until then, Allah Hafiz. तो दोबारा से आप सब व्यूअर्स का खैर मकदम करना चाहेंगे। रन चेज में उतरी है शगू स्पोर्ट्स की टीम और पहली ही गेंद पर चौका हासिल किया यहां पर आसिफ ने। आसिफ दिलशाद जो है वो स्ट्राइक पर है और नॉन स्ट्राइक एंड पर है यासीन, जबकि फुरकान बाएं हाथ के गेंदबाज। अगली गेंद के साथ आसिफ के लिए पैड से टकराई जोरदार अपील, लेकिन अपील को नकारा अंपायर ने। महफूज क्रीज में आसिफ। तो मैच का जो है दूसरी पारी का बाज़ाब्ता तौर आगाज होता हुआ और रन चेज में उतरी है यहां पर शगू स्पोर्ट्स की टीम, जिन्हें जीत के लिए दरकार 104 रन्स, 100 बल्कि 108 रन्स चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। फुरकान बॉलिंग मार्क पर है और सामना करेंगे उनकी गेंद का दाएं हाथ के बल्लेबाज आसिफ। आसिफ जो है वो सामना करेंगे उनकी गेंद का और कैमरा का जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, इस दौरान गेंद को खेल दिया फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन गेंद की रफ्तार उनकी रफ्तार से तेज और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन को छू गई 4 रन के लिए। आपको रीप्ले में दिखाना चाहेंगे किस तरह से इस गेंद को कल्लाइयों का इस्तेमाल किया और 4 रन हासिल किया आसिफ ने। स्कोर बढ़ता हुआ इन 4 रन की मदद से 8। वॉचिंग फ्रॉम हेवंस हब हंदवारा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइव नशरियात को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके और इस मुकाबले का आनंद ले सके। रन चेज में शगू स्पोर्ट्स की टीम उतरी है, जीत के लिए दरकार 108। मजमूई स्कोर है 8। इस मरतबा विकेट छोड़कर गेंद को खेलने की कोशिश, अंदरूनी किनारा और शॉर्ट फाइल लेग पर गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन बनाने का मौका, 1 रन के इजाफे के साथ 9 स्कोर बढ़ता हुआ। जहांगीर लोन हमारे साथ जुड़े हैं। अबू हुरैरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया हेवंस हब हंदवारा से हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अबू दुजान बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अबू दुजान मेरे होम टाउन से। बिलाल भट्ट भी हमारे साथ बडगाम से जुड़े हैं, नारू बडगाम से। और अबू दुजान बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त ये मुकाबला जारी है जानवारा स्पोर्ट्स फील्ड पर। लोन एजाज हमारे साथ जुड़े हैं, वालेकुम सलाम। और जहांगीर लोन भी हमारे साथ जुड़े हैं मुदस्सिर नबी के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। टंगमर्ग से हमारे साथ मुर्तज़ा हिलाल जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लोन
यहां पर शगू स्पोर्ट्स को जीत के लिए दरकार 109 रन। अगली गेंद फुरकान की, इस मरतबा हवा में शॉट, फील्डर गेंद के नीचे, क्या कैच लेने में कामयाब होंगे? जी हां, और पहली विकेट गिरते हुए यासीन के रूप में रिप्ले में आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से इस गेंद को खेला। यासीन ने ऊंचा शॉट, काफी ज्यादा ऊंचा, लेकिन गेंद जो है सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर के हाथ में। तो पहली विकेट गिरते हुए यासीन के रूप में और मजमुई स्कोर है 10। फुरकान के खाते में जाने वाली ये पहली विकेट और फुरकान ने जो है ये विकेट हासिल की यासीन के रूप में। बशीर अहमद मीर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अबुद्दुजान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बट मोमिन जुड़े हैं लोन इजाज के साथ, आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइव नशरियात को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके और इस मुकाबले का आनंद ले सके। दस मजमुई स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। तो जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस मरतबा थर्ड मैन की जानिब जाती हुई गेंद, फील्डर वहां पर जो है रोक नहीं पाए और गेंद बाउंड्री लाइन को छू गई 4 रन के लिए। तो 4 रन का मजीद इजाफा स्कोर में, नो बॉल का इस दौरान इशारा आता हुआ, तो कुल मिलाकर 5 रन का इजाफा। बशारत हमारे साथ जुड़े हैं, शौकत पसवाल BMZ ग्रुप तरकपुरा से मुदस्सिर मीर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लाइव नशरियात को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके। ये दूसरे ओवर का खेल जारी, 15 मजमुई स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। शगू स्पोर्ट्स सोपोर का जीत के लिए दरकार 108 रन। यहाँ जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुबारक ये इमोलिक का कुछ नाम लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शौकत पसवाल भी हमारे साथ जुड़े हैं बिलाल भट्ट के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अबुद्दुजान हमारे साथ जुड़े हैं, बशीर अहमद मीर भी हमारे साथ जुड़े हैं बट मोमिन के साथ, तो ये अहमद फैसल भी जुड़े हैं। तो कुल मिलाकर जो है दूसरे ओवर का खेल जारी, मजमुई स्कोर 15 1 विकेट के नुकसान पर। 15 मजमुई स्कोर। ये मीर बिलाल डाइस हमारे साथ जुड़े, हमारे रेगुलर व्यूअर तारतपुरा कुपवारा से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर मजमुई स्कोर है 15 1 विकेट के नुकसान पर। फुरकान लेफ्टी का ओवर जो है वो अभी जारी है, ओवर की आखिरी गेंद फेंकेंगे। मुर्तजा आए हैं नए बल्लेबाज मुर्तजा हिलाल और सामना करेंगे यहां फुरकान लेफ्टी के ओवर की आखिरी गेंद का। 15 रन आए इस ओवर से, लेकिन 1 विकेट भी आई यासीन के रूप में। फुरकान लेफ्टी ओवर में आखिरी गेंद के साथ ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया और इस मरतबा गेंद को खेल दिया है। फील्डर कोई तैनात नहीं और गेंद सीधे पॉइंट बाउंड्री को छूती हुई 4 रन के लिए। ये चौका आता हुआ मुर्तजा के बल्ले से और स्कोर बढ़ता हुआ इन 4 रन की मदद से 19 हो चुका है पहले ओवर का खेल मुकम्मल। हालांकि महंगा ओवर रन्स के एतबार से, लेकिन विकेट भी हासिल हुई इस ओवर में यासीन के रूप में। तो कुल मिलाकर 19 मजमुई स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। लाला फेरोज हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और परे फैयाज भी पंजीपोरा से हमारे साथ जुड़े हैं बिलाल भट्ट के साथ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डार सद्दीक हमारे साथ जुड़े हैं अबू अयान के साथ, आशिक लोन काजियाबाद करालगुंड से, मीर बिलाल डाइस हमारे साथ जुड़े हैं दारली तारतपुरा कपवारा से, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद फैसल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इनके साथ साथ लाला फिरोज भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो पहले ओवर का खेल मुकम्मल। फुरकान लेफ्टी का ओवर जिसमें उन्होंने विकेट हासिल की, लेकिन 19 रन आए इस पहले ओवर से। मुर्तजा जो है स्ट्राइक पर है और सामना करेंगे, देखना होगा नए बल्लेबाज नए गेंदबाज कौन से आए हैं।
इस मतबा लेग स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से। स्कोर बढ़ता हुआ एक इजाफी रन के साथ 20। मजमूई स्कोर हो चुका है 20, एक विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर का खेल जारी है और बॉलिंग मार्क पर है मोहम्मद अजहर। बल्लेबाजी में कहा जाएगा कि टॉप स्कोरर रहे राइजिंग स्टार सोपोर के मोहम्मद अजहर। अब गेंदबाजी में देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। गेंद के कदमों का इस्तेमाल, गेंद को खेल दिया, मिड विकेट पर कोई फील्डर तैनात नहीं और गेंद गोली की मानंद बाउंड्री लाइन पार 4 रन के लिए। यह चौका आता हुआ यहां आसिफ के बल्ले से और स्कोर बढ़ता हुआ 24, एक विकेट के नुकसान पर। बिलाल बशीर हमारे साथ जुड़े हैं, उबैयान बारामुल्ला से हमारे साथ जुड़े हैं। नजीर चची, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये मैच कहां पे, ये मैच जो है इस वक्त जानवारा स्पोर्ट्स फील्ड पर जारी है। अगली गेंद अब मोहम्मद अजहर की हवा में खेला गया स्ट्रोक, फील्डर गेंद के नीचे जाने की कोशिश में, लेकिन गेंद जो है 3 फील्डरों के दरमियान जाकर गिरी। इस दौरान 1 रन का इजाफा स्कोर में। स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन के इजाफे के साथ 25 हो चुका है, एक विकेट के नुकसान पर। मुर्तजा सामना करेंगे मोहम्मद अजहर की गेंद का। दार आजाद, अबू अय्यान बारामुल्ला से बशीर बिलाल हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक और क्रिक हीरो सकते हैं। मोहम्मद अजहर जो है बॉलिंग मार्क, मोहम्मद अजहर। अगली गेंद, गेंद की और इस मतलब हवा में शॉट, लेकिन फिर ये गेंदबाज जो है बिलाल बशीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दार आजाद भी हमारे साथ जुड़े हैं। स्कोर शगू स्पोर्ट सोपोर का 1 विकेट के नुकसान। मोहम्मद अजहर अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट, बैट और पैड साथ मिलाते हुए विकेट कवर करके गेंद को खेल। बशीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इरफान जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिलानी नाजकी भी हमारे 5वीं गेंद के साथ ऑफ स्टंप से बाहर गेंद और अंपायर की जाने बल्लेबाज ने गेंद जाती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कुल मिलाकर मजमूई स्कोर है नगरी प्रीमियर लीग 4th एडिशन जल्दी स्टार्ट होगा। ये जानकारी देने के लिए आप इस मतलब लेग स्टंप के आसपास गेंद को खेल दिया कल्लाइयों के इस्तेमाल से और इस दौरान जब तक गेंद को फील्ड किया जाता एक विकेट के नुकसान पर। और नेटवर्क इशू के हवाले से जानकारी दे रहे हैं, जी बिल्कुल, और इसे दूर करने की कोशिश करेंगे। (26) for the loss of 1 after 2 overs, chasing 108 runs. As a rising star of Sopore doesn't have enough runs on board, just 107 is what they were able to manage. And while in chasing, Shagoo Sports Sopore is a formidable batting side they have, and they lost a wicket here. They lost Yasin early, but they got off to a fiery start. 26 of just 2 overs. With Asif Dilshad Malik going all guns blazing, he's batting on 14 of just 5 bowlers, and Murtaza Hilal is batting on 5. Bilal Bashir and Bilal is also watching. It was a slight fluctuation, it was a slight technical issue. It has been sorted out, it's working fine now, you're enjoying it. (28) for the loss of 1. Umar goes once again, driven down to mid-on, and the batter steal a quick single. Can do it easily, just 108, and have a great batting depth, Shagoo Sports Sopore. And in the meantime, 29 for the loss of 1. Asif Dilshad Malik and Murtaza Hilal out there in the middle. Umar Saidullah is bowling his first over from the far end, and he is
just keeping his fielders busy out there. Mid-on drops to long on, deep mid-wicket comes inside the ring as he goes for the fourth time over the stumps. And that's a good ball, a pacey delivery outside off stump, and Asif Dilshad was trying to be clever. He was trying to work it on the offside, guide it, but he on that region. He's got that gully, shot third man, stretch point, cover, shot cover in place, and he's got long off out. So a ring of fielders on the offside, you can say a heavily cordoned offside field. That's a beautiful delivery, and umpire says no, appealing for LBW, and he was beaten on the pace. It was right in the block hole, but the batter just manages an inside edge onto the pads. Inside edge saves him, as that is what umpire was signalling there. But that was an absolute brute of a delivery, and Asif Dilshad Malik had no clues where the ball was going, and somehow he manages to get a little inside edge, then onto the pads, and he survives. With the ball to go, 29 for 1 need. Wickets at the top to defend this score. Down the track he goes, and he's a lucky man, gets an inside edge. And this ground has lightning fast outfield. Once you get the ball in the gap, say your legs as the ball runs away into the boundary for 4. Not a convincing one, not timed it well. He was never in control of the ball, but he will take it, gets an inside edge down to the boundary for 4. As if you can see a blanket of grass has been laid on this ground. Looks so beautiful, and we're in over number 5, next ball, and he pushes that one on the offside, calls his partner for a quick that single right in front of the nose of the fielder who was fielding at backward up point. Excellent running between the wickets, and it is 51 for the loss of 1. Just 57 runs away to taste a victory here in Janwara Cricket League. They've done all the basics right. They've done a great job today with the ball. They restricted the side. This has been nicely placed, but fine is the fielder inside the ring. There is man at gilly and no addition to the total. 51 for the loss of 1. Asif Dilshad is batting on a different kind of a wicket. He's batting on 24 of just 11 bowlers, and Murtaza Hilal on 20 of 16. A good partnership going between these two. As he goes once again, down the track he goes, but doesn't connect at all. Has been completely beaten, and the ball goes into the gloves of wicketkeeper. 51 for the loss of 1 after 4 overs. Chasing a solitary, a modest target of 108. It has been a blistering start for Shagoo Sports Sopore. It's always a tough side to beat. I got all things covered, be it their batting, be it their bowling or their fielding. They have been on a roll with the ball, with captain leading from the front, picking up a 4-wicket haul, and were able to bundle out their opposition to just 107. While in chasing, they are just showing that positive intent with the bat. And after 5 overs, they stand at 51 for 1 now. 90 balls to go, 57 to win. It should be a cakewalk for the batting side, and should be a piece of cake for them. And we got Naiko Ejaz. In the meantime, RJ Malik, walaikum salam, and Amir Butt watching from Butt Traders, Marazigun, Rafiabad. 15 more overs to go, and need a miracle from here on to get the team all out to win the match from this situation. As I said, it will need special efforts from Rising Star Sopore to secure victory, or to bundle out the side of Shagoo Sports. Looks very tough from here on, but anything is possible in cricket. That is why we call it a game of glorious uncertainties. And you cannot get the result until the final ball is bowled. So it will be the change of ends for the bowlers. He'll be bowling from the commentary box end. And the 6th over, the final over of the power play, we got the new bowler being introduced into the attack, and he is just having a quick look at the field. It will be the pocket size dynamite Murtaza Hilal to face him for the first time, and he gets an uneven bounce onto that. Extra bounce rising off the good length spot, and Murtaza was beaten due to the extra bounce, and the ball goes into the gloves of wicketkeeper. He's got 1, 2, 3, 4, 5 fielders on the offside.
And on the onside, he's got two fielders inside the ring. As he goes to Murtaza once again, and he punches it away, but finds the fielder and overthrows, and it will cost them a single. And it could have been a dot delivery. It has costed them a single. Score moves on to 52 for the loss of 1. Just 56 away of 88 deliveries. As I told you earlier, it should be a cakewalk for the batting side, the kind of batting they possess, the kind of batting depth they have. And Asif pulls him away, pulls this one in the gap and down to the mid-wicket boundary for 4. Sits up nicely for the batter. He waits for the ball to come and absolutely thrashes that one away, hammers that one away down to the mid-wicket fence for 4. At this stage, this is looking a one-sided game, a one-way traffic going on, and dominant with the ball and terrific with the bat, and it is 56 for the loss of 1. Just 52 runs away to a crushing at Janwara Sports Field, and it's Janwara Cricket League coming your way, and in over number 6 it's 56 for the loss of 1. Shagoo Sport to Sopore, they have done a brilliant job today in this game. As Azhar goes once again down the leg side, he was trying to go for the no-look shot, and he gets an inside edge straight to the wicket keeper. He has been caught down the leg side, can you believe it? And even the batter doesn't believe it at all. It was a harmless delivery down the leg side, and this he'd have hit this one to any part of the ground, but this time he gets a little tickle to the keeper, and umpire says yes, she's got the edge. Asif Dilshad Malik walks back to the pavilion after playing a handy knock of 28. 56 for the loss of 2. He has broken through, he has got rid of the batter who was proving to be very handy with the bat, but all of a sudden a wicket coming against the run-up play. It was a harmless delivery, and as I told you, any day the batter could have hit this one to any part of the ground. This was down the leg side, and he was trying to go for the no. Brings to his downfall. Batting side the way they started in a brings to his downfall. Batting side the way they started in a positive way with Dilshad Malik going through. It will be Basit Dar. Goes nicely up and over and absolutely thrashes that one away down to the boundary. Through. It will be Basit Dar. Goes nicely up and over and absolutely thrashes that one away down to the boundary. Shot in wide outside off stump, and Basit Dar is just having a piece of this one and smoking that one away for 4. You got a couple of viewers watching from Royal Traders, and they're watching us on YouTube. And Rahi Asif, thank you very much, brother, for your love and support. 6 overs gone, and it is 60 for the loss of 2. 48 runs to get of 84 balls. शुक्रिया फिरदौस। 60 है मजमूई स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर 6 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है, और यहाँ 48 रन्स चाहिए हो चुका है, और यहाँ 48 रन्स चाहिए मुकाबला जीतने के लिए शगू स्पोर्ट्स सोपोर को। राइजिंग स्टार सोपोर और शगू स्पोर्ट्स सोपोर के दरमियान जानवारा क्रिकेट लीग के तहत एक अहम मुकाबला जानवारा स्पोर्ट्स फील्ड पर इस वक्त जारी, और कहा जाएगा कि ये स्पोर्ट्स फील्ड जो है T20 खेल के एतबार से देखा जाए तो बड़ा मवाफिक मैदान, क्रिकेट के एतबार से बड़ा खूबसूरत मैदान जानवारा स्पोर्ट्स फील्ड, और जानवारा क्रिकेट लीग के तहत एक अहम मुकाबला इस वक्त जारी शगू स्पोर्ट्स और राइजिंग स्टार सोपोर के माबैन। 7वें ओवर की पहली गेंद, विकेटों में आती हुई गेंद को खेल दिया, रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया नॉन स्ट्राइक एंड से बल्लेबाज ने, महफूज क्रीज में दोनों बल्लेबाज। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुर्तजा हिलाल और बासित दार इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। बासित ने 4 रन बनाए 1 चौके की मदद से, जबकि मुर्तजा हिलाल ने 21 रन बनाए। तो जितने भी दोस्त हैं हमारे साथ जुड़े, आसिक अली भट्ट हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बासित के लिए अपना प्यार भेज रहे हैं।
राही आसिफ हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यूट्यूब पर हमारे साथ रॉयल ट्रेडिंग हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। परवेज खान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बॉलिंग मार्क से अगली गेंद के साथ गेंदबाज उमर सैदुल्ला, और इस मरतबा गेंद को खेल दिया हवा में, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर जाके गिरी 6 रन के लिए। आपको रीप्ले में दिखाना चाहेंगे किस तरह से ये स्ट्रोक खेला बल्लेबाज मुर्तजा ने, और बैक फुट पर बड़ा खूबसूरत कट और गेंद हवा में लहराती हुई सीधे मैदान से बाहर 6 रन के लिए। तो इन 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 66, मजीद 42 रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए, और एकतरफा मुकाबला साबित होता हुआ शगू स्पोर्ट्स और राइजिंग स्टार सोपोर के माबैन। अभी तक कहा जाएगा एकतरफा मुकाबला मैच, और इस मरतबा बल्ले का बाहरी किनारा और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री को छूती हुई 4 रन के लिए। लगातार रन आ रहे हैं और इन 4 रन के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ 70, 2 विकेटों के नुकसान पर। रॉयल ट्रेडिंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जानना चाहते हैं कि इस टूर्नामेंट में एंट्री मिलेगी इन्हें। जी नहीं, टूर्नामेंट में जो है ऑलरेडी टीम्स जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। 32 टीमों पर मुश्तमिल ये टूर्नामेंट है, और 32 टीमों ने जो है इस टूर्नामेंट में एंट्री हासिल की है। अगली गेंद ओवर द विकेट, गेंद की हवा में खेला गया स्ट्रोक, फील्डर गेंद के नीचे और कैच लेने में कामयाब। इस तरह से तीसरी विकेट गिरती हुई ये मुर्तजा हिलाल के रूप में, मुर्तजा हिलाल आउट होकर पवेलियन वापस जाते हुए, और तीसरी विकेट गिरी मुर्तजा हिलाल के रूप में 70 के मजमूई स्कोर पर। उमर सैदुल्ला के खाते में गई विकेट और तीसरी विकेट गिरी 70 के मजमूई स्कोर पर, सैदुल्ला के खाते में जाने वाली विकेट। रॉयल ट्रेडिंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये टूर्नामेंट जो है जानवारा स्पोर्ट्स फील्ड पर, जो कि कस्बे सोपोर के करीब वाक़ा मैदान है, गालिबन सोपोर से 2 या 3 किलोमीटर दूरी पर वाक़ा। एम इकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अबू जैद भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टारगेट कम है बहुत, जी बिल्कुल। आशिक अली बट भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो नए बल्लेबाज आए हैं लोन मोमेन, जो कि टीम के कप्तान है। 6153 रन जो है ऑलरेडी लोन मोमेन के पास मौजूद। 6153 रन लोन मोमेन नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं, और लोन मोमेन के हवाले से मुझे एक पारी उनकी याद आती है जो उन्होंने एक तरफा पारी खेली थी पीरनिया स्पोर्ट्स फील्ड पर। हालांकि उस मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा था इनकी टीम को, लेकिन लाजवाब पारी खेली और आखिरी दम तक जो है उस मुकाबले में लड़ते रहे। और आदिल मीर भी है हमारे साथ जुड़े। सर, मैच कहाँ पे है? मैच इस वक्त जानवारा स्पोर्ट्स फील्ड पर जारी है। जानवारा क्रिकेट लीग के तहत एक अहम मुकाबला, कल यहाँ पे 2 मुकाबले खेले जाएंगे, और संडे को भी इस मैदान में 2 मुकाबले खेले जाएंगे जानवारा क्रिकेट लीग के तहत। बॉलिंग मार्क से उमर सैदुल्ला ओवर की 5वीं गेंद के साथ, और सामना करेंगे नए बल्लेबाज लोन मोमेन। लोन मोमेन एक मंजे हुए खिलाड़ी के तौर पर जो है उनका नाम शुमार किया जाता है, और वो आए हैं बल्लेबाजी के लिए। शगू स्पोर्ट्स टीम के कप्तान भी है। सामने है सैदुल्ला के, गेंद को खेला, विकेट में आती हुई गेंद, नो बॉल का इशारा, और हाथ खोलने का भरपूर मौका है बासितदार के पास। बासितदार के पास भरपूर मौका हाथ खोलने का। आदिल मीर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और कुल मिलाकर ये मुकाबला जो है अब कहा जाएगा कि एकतरफा मुकाबला साबित होता हुआ, अगर इस मुकाबले में मजीद 2-3 विकेटें गिरती है आने वाले 1-2 ओवर्स में, तो तब राइजिंग स्टार सोपोर की टीम मैच में वापस आ सकती है। 71 मजमूई स्कोर है, और अभी भी 37 रन चाहिए मुकाबला जीतने, बल्कि 36 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 72 है मजमूई स्कोर। हाथ खोलने का भरपूर मौका बासित के पास, और गेंद को खेल दिया, फील्डर उस पर मौजूद, और उन्होंने गेंद को रोकने में कामयाब हुए, और 1 रन का इजाफा स्कोर में। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ 73, 3 विकेटों के नुकसान पर। लोन मोमेन अब स्ट्राइक पर होंगे, सामना करेंगे यहां पर उमर सैदुल्ला की गेंद का। उमर सैदुल्ला ओवर में आखिरी गेंद के साथ, ये 8वें बल्कि
7वें ओवर का खेल जारी है। गेंद की बैक फुट पर गेंद को खेल दिया लोन मोमिन ने। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, रन के लिए गए थे लेकिन मना किया बासित डार ने। ओवर मुकम्मल। 7 ओवर्स के इख्तिताम पर 73 मजमूई स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। रॉयल ट्रेडिंग हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और है रॉयल ट्रेडिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप ऑर्गेनाइजर्स का नंबर जो है नोट कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर आप ऑर्गेनाइजिंग बॉडी को कोई ताउन दे रहे हैं तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नंबर नोट कर सकते हैं 9797 705949। दोबारा मैं आपको जो है नंबर रिपीट करूंगा 9797 705949। हवा में खेला गया स्ट्रोक, फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन कैच ड्रॉप होता हुआ मौका मिला था बासित डार की जो है विकेट का, लेकिन फील्डर जो है डाइव लगाकर कैच लेने की कोशिश में, लेकिन कैच। खान कासिम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खान कासिम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइव नशरियात को जो है जरूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके। फुरकान बशीर हमारे साथ जुड़े। मैच कहां पे चल रहा है? जानवारा स्पोर्ट्स फील्ड पे। खान कासिम कामर रफियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यह 8वें ओवर का खेल जारी है। रफीक बॉलिंग मार्क पर है। अगली गेंद ओवर द विकेट। गेंद की इस मतबा बासित के लिए गेंद को खेला, फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का मौका, 1 रन हासिल। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ अब 75। तो जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फुरकान हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फुरकान हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस लाइव नशरियात को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके और इस मुकाबले का आनंद ले सके। तो रॉयल ट्रेडिंग जो हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ज़रूर जानकारी दीजिएगा कि क्या आप जो है आप तक नंबर पहुंच चुका है, आपने नंबर नोट किया है। अगर नहीं किया होगा तो हम रिपीट करने के लिए बिल्कुल यहाँ पे मौजूद है और कोशिश करेंगे हम डिस्प्ले पे भी नंबर दे सके। हम कोशिश करेंगे डिस्प्ले पे भी आपको नंबर दे सके ताकि आप नंबर जो है उसे हासिल कर सके। इस दौरान गेंद को खेला मोहतात अंदाज से। ओवर मुकम्मल होता हुआ कुल मिलाकर 8 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 80 मजमूई स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर शगू स्पोर्ट्स सोपोर का। जीत के लिए दरकार मजीद 28 रन, जबकि अभी भी 12 ओवर्स का आना बाकी है। Just 28 runs away and 12 more overs to go, and they're going at 10 runs per over, 80 for the loss of 3. Momin, who just arrived to the crease, is batting on 2 of 4, and Basit Dar, known for his big shots, he is batting on 11. He's got that one boundary. He started with a boundary of the first ball he faced it. And Furkan Bashir, it's here at Janwara Sports Field, and you're watching Janwara Cricket League, and all-important game between Shagoo Sports Sopore and Rising Stars. This time Basit Dar goes across the stumps and works that one fine down to the deep scare leg region. 2 more runs have been added, and you could see they're chasing 108 runs, and this game is going one-sided in favour of Shagoo Sports Sopore. It's 9th over in progress, and Basit Dar will be facing Shakir Butt. It's the 9th over, 82 for the loss of 3, just 26 runs away from a victory. And Basit Dar is hungry for runs, and he just defenders that one back to the bowler. He was solid in defence with bat and pad close to each other. And the ball trickles back along the track back to the bowler. He's a close-in gully fielder. He has cover and extra cover inside the ring. Next ball, and again that's a good ball.
and he wraps Basidar on the pads, but it was pitching outside leg stump and umpire says no. A slight appeal of LBW as Basit was leaving the crease. He was exposing all the stumps. That's what saved him. As Shakir goes, next ball, full toss, back pass the bowler, driven hard, down the ground. Couple of bounces and into the fence for 4. Takes it on the full. He puts on those dancing shoes and hits it really hard down the ground, and couple of bounces into the fence. Next ball, he goes off the back foot and pulls that one into the mid-wicket boundary. Short off length ball, he uses the crease. It was a drag down and Basidar pummels that one away, and he needs no second invitation. He's not going to waste any time. 90 for 3, just 18 runs away. Shakir goes to Basit, down he comes, and he goes cross-batted once again. Couple of bounces into the fence for 4. Hat-trick of boundaries, and Basidar is breathing fire with the bat. And Royal Trading, you got the number of the organizing body. So if you want our number as well, you can note down 7780818521. And once again, I am going to repeat the number. You can note down 7780818521. 94 for 3, just 14 runs away. It will be the skipper moment to face. First ball, down the track he goes up and over extra cover. And he's got this one in the gap, but they will have to stay with a single only. Basidar says no, he shouts no. 95 for 3. Can Basidar finish this one in this over? And he is in a hurry to finish this one. Royal Trading, if you're watching, you can note down the number after this ball. And in the meantime, down the track goes Basidar. Lofts that one away. Long on is just a spectator. And as I told you, he is in a hurry to finish the game. One bounce into the fence, 99 for 3. Royal Trading, you can note down the number once again, brother. 7780818521. Rafiq Dar to Basit. And Basit goes off the back foot, punches that one straight to cover, and there is no run at all. And, 99 for 3. 3 more balls to go in this over. Basit, and he waits off the back foot, he goes and smokes the ball into the stands for 6. And deft use of the crease, and he's got all the shots in his book. He uses that crease very well, and off the back foot he generates lot of power behind the shot and sends that one way back into the stands. It's a towering 6. And just 3 runs away. Rafiq Dar goes once again, and Basit, he just wants to finish this game in a hurry. Shot in wide and put down by the fielder. It was in the air and had a chance to get rid of Basit Dar. 3 runs to go, 3 runs to get, and we still have got a ball to go in this over. And Basit just pushes that one back to the bowler. I guess he is just going to give chance to Lone Momin to hit those winning runs. Lone Momin, he has got a chance to hit those winning runs, and he might get a man of the match award as well, because this man, he got 4 wickets. He broke the backbone of the batting side. He was rattling them early when he was bowling, and he has got a chance to hit those winning runs. And Royal Trading, I am Firdaus, and alongside me, my fellow commentator is Sophie Parvez. And if you haven't got the number yet, I'm repeating it once again, 7780818521. So Lone Momin has got a chance to hit the winning runs. 3 more runs to get to register a crushing and a thumping victory. It will be the new bowler bowling from the far end, and it has been a one-sided game, and it's been a one-sided domination by Shagoo Sports, and they have a formidable side. It needed special efforts against this team, and it will be Umair Saidullah to send down this over, and Lone Momin, the captain, facing with the first ball, and capped a bit low, but Lone Momin is watchful. He watches the ball till the last moment, pushes it down to the cover, and there is filler inside the ring.
can't beat the fielder though, and he will have to stay at their respective ends. In the meantime, next ball to Momin, and he thrashes that one on the offside, denies the single though. He just wants to finish the game on his own. There could have been a single, but he says no. So he just wants to finish it with a big shot. We'll have to wait and watch. Can he do it? Can he finish Umar Saidullah to Momin? Shot, and he pulls him away, pulls him for 6 and finishes the game with style. Finishes the game with a 6 and hits the winning runs as well. Shagoo Sports have won this game quite comprehensively. They have won this game one-sided by 7 wickets. So many congratulations to the side for booking the place in the next round, and they have knocked out the side of Rising Star Sopore out of Janwara Cricket League. So this is it for the day, and tomorrow we'll be joining you from the same sports field, bringing you the double header of the day. Until then, it's over to you.